ऐसी होने वाली
Hello guys, very good evening to one and all present over here, right? Just check my audio and video quality. Just check my audio and video clarity. Is it okay? ठीक है, चलो. Very good evening to one and all present over here, guys. Very good evening. Okay, all good? Great. Very good. चलिए. So today we are going to start a very important topic of your engineering mathematics, right? That is your probability, and I will make you expertise in probability, right? I will make you expertise in probability, right? So you have to attend all my lectures to become expert in probability. ठीक है, आपके 2 मार्क जो भी होंगे probability के अंदर 2 to 3 mark questions are there from the probability, और this is compulsory question. ऐसा नहीं होगा कि कभी भी probability से question नहीं आया होगा, right? It will be the compulsory question from probability, and I am here to make you expert in probability. That is why I have put this name expertise in probability, right? That is why I have put heading expertise in probability. ठीक है, so हम लोग को probability को बहुत अच्छी तरीके से करना है, right? ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. आप लोग को सारी चीज एकदम पहले तो अच्छी तरीके से समझनी है, एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. And the only thing you can do is for GATE that you can just practice all the previous year GATE examples, right? मतलब अगर आपने सारे previous year GATE examples अगर अच्छी तरीके से solve करना आ गया, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए, then it will be very good for you for scoring the good marks in probability in any of the exams, right? मतलब गेट के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं they are having some standards, right? So वो standard questions अगर आप लोग के अच्छे हो जाते, so that will give you a very good confidence in probability. Now this topic is also there in your intermediate standards, right? That means in 12th standard also it was there, but some of the students got stuck in probability because it is a very easy to it is very difficult to understand, right? Clear? Okay. So everyone is studying from zero, right? Everyone is studying from first time the probability. You should have the knowledge of this just the permutation and combination. So wherever required, I will tell you some knowledge. Wherever required, I will tell you some knowledge about the permutation and combination. ठीक है? So सारी चीज मैं आप लोग को बताते जाऊंगा, right? But you have to practice it from the GATE previous year book, right? आप लोग को सारे questions previous year book में से करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए. Okay, just I'm waiting for 1 or 2 minutes more. Let the student to enter, and then we can start off with the topic, the very important topic. I hope you get the notes of today's class also, right? आपको शायद आज मेरे क्लास की जो नोट्स हो गए, जो भी हमने मल्टीपल इंटीग्रल्स पढ़ा था, वो सारी नोट्स आप लोग को आ गई है ना. आप लोग प्लीज उसमें से नोट्स बनाया, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो. ठीक है, प्लीज आप लोग एक अपना नोट्स बनाना उसके अंदर से, ताकि आप लोग को बहुत बेनिफिट हो जाए उसके अंदर से, बिकॉज दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स, राइट? बिकॉज यू आर अटेंडिंग द क्लास, just you have to make the notes that will be helpful for this year or for the next year. Okay, chaliye. Okay, some students are still joining, right? Some students are still joining. Let us become expertise in probability. Let us become experts in probability, right? So I will start with the basics of probability. I will start from the scratch only, right? I will start with the basics of probability, and let us see how we can go to the higher level problems of probability. ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे. You have to just concentrate, and you have to ask me the question in between if you are having any doubt. ठीक है. Probability question is generally 2 mark question. Shruth, probability generally 2 marks. 2 marks के लिए आता है, कभी कभी 3 marks के लिए 1 marker and 1 2 marker भी हो जाता है probability के लिए. ठीक है, so it is a compulsory question in all branches. Probability question is compulsory question in all branches. हर एक ब्रांच में probability का क्वेश्चन रहता ही है, right or not? Probability का क्वेश्चन हर एक ब्रांच के लिए रहता ही है, correct? Okay guys, so let us start now without wasting much time. चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. जिन स्टूडेंट्स को ज्वाइन होना था वो ऑलमोस्ट सारे ज्वाइन हो ही चुके, ठीक है, वो लोग सारे ज्वाइन हो चुके. तो अब हम लोग जो है वो बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं, राइट? Let us start now from the basics of probability. Very simple to understand. Very simple to understand. Now, see over here. Now, I am starting with the example. In probability, if you solve many examples, then it will be very important for you. ठीक है, देखो मतलब आप लोग तभी समझोगे. You can see I am starting with an example. You can see in the PDF that this is their example.
if you are rolling a fair dice, let a fair dice be rolled once, right? Fair dice means each faces are having different numbers, right? Total there are 6 faces on the fair dice, and each faces are having different numbers. So if you are rolling a fair dice, then what all are the possible outcomes? आप लोग के पास पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? तो यू कैन से दैट द पॉसिबल आउटकम्स आर either it can be 1, either it can be 2 or 3 or 4 or 5 or 6. So these are the possible outcomes when you roll a fair dice. So this is a tossing a fair dice is called as a random experiment, right? जब आप डाई को टॉस कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं random experiment. Random experiment, and the all possible outcomes of random experiment is known as sample space. So मैंने सारे possible outcomes को एक सेट के फॉर्मेशन में लिख दिया, एक सेट फॉर्म में लिख दिया. So sample space is the set of all the possible outcomes of random experiment. Sample space को हम क्या बोलते हैं? It is the set of all possible outcomes of random experiment, right? So it is denoted by capital S. Sometimes in some books it is also denoted by omega, right? Sometimes in some books it is also denoted by omega. So random experiment is any experiment you are doing randomly, right? For example, you are tossing a dice. For example, you are tossing a coin. So that is your random experiment. For example, you are taking one card out of deck of 52 cards. So these all are your random experiment. From that random experiment, if for a single random experiment, if I am writing all the possible outcomes, the set of that possible outcomes, I will call that set as a sample space. I will call that set as a sample space, or you can also call that set as a universal set. वो set को तुम क्या बोलोगे? Universal set. Now all probability topic are related to sets only, right? So you should have some knowledge. तो sets मतलब सारे elements को तुमने within the curly brackets separated by comma के अंदर लिख दिया, तो उसको हम बोलते set notation. So I have written all the possible outcomes in the set formation. So that will give you the sample space, right? So first of all, guys, do you got cleared about the sample space, right? आपको sample space क्या होता है समझ में आया सबको, right? The set of all possible outcomes is sample space. Now if you are tossing a coin, then what will be your sample space? If you are tossing a coin, what will be your sample space? So you will get either it can be head or it can be tail, right? Either it can be head or it can be tail, right? So random experiment के अंदर सारे possible outcome को अगर तुमने set में लिख दिया, तो उसको हम बोलेंगे sample space. Okay, very good. चलिए, sample space. Now I am having some of the events. That means any set which is a subset of sample space, any set which is the subset of sample space is termed as the event of the is termed as what? Event, right? any term which is termed any set which is a subset of sample space, any set which is a subset of sample space is termed as what? Event of sample space. For example, let A be the event. For that the outcome is divisible by 3. Let A be the event that outcome is divisible by 3. So here it is written that set A consists of the outcome which is divisible by 3, right? So which are the outcomes which is divisible by 3 out of this sample space? आपके पास जो सैंपल स्पेस है ना, आपके पास जो सैंपल स्पेस है उसके ऊपर से आप लोग कैसे आउटकम लिख सकते हो? सो आप बोल सकते हो सर ये तो आइदर 3 आ सकता है या तो 6 आ सकता है, राइट? आइदर 3 आ सकता है या तो 6 आ सकता है. वेरी गुड. सो दिस A is said to be event. इसको हम क्या बोलेंगे? Event. Or you can say that A is a subset of sample space. So any set which is a subset of sample space is termed as event, right? So I hope you got cleared about what is the meaning of event, right? I hope you got cleared about what is the meaning of event. ठीक है, समझ में आया? मीनिंग ऑफ इवेंट आपको समझ में आ गया? ठीक है, प्लीज डोंट राइट अननेसेसरी एनी कमेंट्स, राइट? व्हाट आई एम आस्किंग, जस्ट वही चीज आप लोग लिखो. ठीक है, मैं पूरी चीज आप लोग को बताऊंगा. क्लियर? जो मैं आप लोग को पूछ रहा हूँ वही चीज लिखना. आप लोग और ज्यादा आगे मत लिखते रहना चैट के अंदर, राइट? बिकॉज सम स्टूडेंट्स आर गेटिंग डिस्टर्ब फ्रॉम दैट एंड आई कैन नॉट मेक दिस टेस्ट ओनली टू द होस्ट, राइट? मतलब ऐसा नहीं हो पा रहा है that the main settings is done by the management only. They just give me the link only, right? So that I am not knowing over here. So just whatever I am telling you, just answer through that only. So here it is written that event is a subset of S. Event is a subset of S.
Then if I want the probability of this event A, then if I want the probability of event A, right? Then if I want the probability of event A, if I want the probability of event A, then it will be the number of elements in event A upon the number of elements in sample space. It will be what? The number of elements in event A to the number of elements of sample space. Number of elements in A upon number of elements in sample space. That means you can also call it favorable outcomes. Number of elements favorable to event A upon total possible outcomes. Number of event favorable to A divided by total possible outcomes. So this will give you, now there are two elements in A, and out of the sample space is 2 by 6, it will give you 1 by 3. So the probability of event A you will get as 1 by 3. Probability of event A you will get as 1 by 3, right? So that is the definition of probability. It is a classical definition that you have already studied from your lower standards, right? मतलब आप 10 से ये पढ़ते आते हैं, number favorable outcomes upon total number of outcomes, favorable outcomes upon total number of outcomes. Okay, next. Now B is the event that outcome is even number. Okay, B is the event, the outcome is even number. So the elements in the event B will be 1, 3 and 5. My elements in event B will be 1, 3 and 5. And if I want to write the probability of B, so total number of favorable outcomes are 3 and the total number of elements in sample space is 6. So my answer will be 1 by 2. So my answer will be 1 by 2. Okay, even number. Sorry, I have written in the odd number. It is even number. So it will be 2, 4, 6. It will be 2, 4, 6. It will be 2, 4 and 6. Very good. Chali. It will be 2, 4, 6. So my probability of event B will be 1 by 2. My probability of the event B will be 1 by 2. Okay. Now, if I want to write an event C, what will be the outcome for an odd number? Event that outcome is an odd number. Then outcome is an odd number is 1, 3 and 5. Outcome is an odd number is 1, 3 and 5. Then what is the probability of C? Then what is the probability of event C? So you can say that the total number of outcomes is 6. And the total number of favorable outcomes is 3. So there is 3 upon 6. There is again your 1 by 2. Again, your probability of event C is 1 by 2, right? So probability is event C also is 1 by 2. Correct or not? Probability आपका 1 by 2 हो गया event C का. Clear. ये सब चीजें एकदम clear हो रही है, right? Okay, next. चलिए. So this was the definition of probability. Again, I am defining one event D. Again, I am defining one event D. You can see that event that outcome is less than 5. Event that outcome is less than 5 means it is the event having the elements 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. So if I want to write the probability of D, event D, so that will give me the 4 by 6. And what is 4 by 6? What is 4 by 6? So you will get over here, it is 2 by 3. 4 by 6 will give you 2 by 3. So this is the probability of event D, right? The outcome is less than 5. Now I am again specifying one event, the event that outcome is greater than equal to. Now it is written greater than equal to 3. That means this will give you 3, 4, 5 and 6. This will give you 3, 4, 5 and 6. And the probability of event E will give you again 4 by 6. That will be again 2 by 3. Again, that will be 2 by 3, right? Now, why I am writing so much of events? Because I want to mix and match some of the events out of these all events. So that is why I have written all these events. That is why I am writing the probability of all these events, right? That is why I am writing this. After that, I will mix and match some of these events, and I will show you what are all results that you are getting from it, right? So I am having one F event. Let F be the event that outcome is less than 8. Okay, I am having one event such that the outcome is less than 8. Outcome is less than 8. Outcome is less than 8. So if you write over here, outcome less than 8 will be 1, 2, 3, 4, 5, and 6. These are the outcome less than 8. So the probability of F you are writing, it will be the number of favorable outcomes is 6 divided by total number of outcomes is 6 divided by total number of outcome is 6. So your answer is 1. And if the probability of any event, कोई भी event का probability को answer 1 आ जाता है, if the probability of any event, if you are getting answer as 1, then that event is known as sure event. That is why I have written this event
then the event is known as sure event, or you can say certain event. Then you can also call it as a sure event, or you can also call it as a certain event. अगर किसी probability, अगर किसी event का probability अगर आप लोग का 1 हो जाता है, then it is a sure event. Surely वो होने वाला है, right or not? Surely वो चीज होने वाली है, that is known as sure event. Then and only then you can you can say that the event the probability is 1, right? The probability of that event is 1. Clear, right? Okay, now G is the event that is greater than 7. So if I want to write the G, G is the event that is greater than 7, and if I want to write the what are the elements in the G, now you can see, can I get any element which is greater than greater than 7? Sorry, can I get any elements which is greater than 7? Because your sample space contains only 1 to 6, you will not get any element which is greater than 7. So your G is your null set. G is your null set. Null set means there are no elements in the set. Null set means what? There are no elements in the set. And if you write the probability of this G, then there are no elements. There are no elements, and total number of elements is 6. Your probability of event G will be 0. Probability of event G is 0, right or not? So this event is known as impossible event. This event is known as impossible event or null event. Impossible or empty event or null event. Empty event or null event, right? So such a type, they are having some names, right? So your probability of any event is 0, then it is called impossible event. That event will never happen. That event will never happen. If I am tossing a dice, I cannot get a number which is greater than 7, right? I cannot get a number which is greater than 7 if I am doing that random experiment of throwing a dice, right? So you have to, you are bounded with that sample space. You are bounded with the sample space 1 to 6. From that sample space, you are considering G is a null set, right? मतलब ऐसा नहीं है कि number greater than 7 कभी आ ही नहीं सकता. अरे यार आप लोग bounded हो sample space कौन सी 1 to 6. You are bounded with that random experiment. On considering that random experiment, you are writing the elements of all these events, right? वो random experiment को consider करके आप लोग ये सारे events लिख रहे हो. So this will give you 0. So if you see that the probability, the maximum value of probability is 1 and the minimum value of probability is 0, then you can say that the answer of probability of any event, the answer of probability of any event will be always greater than 0, greater than equal to 0 and less than equal to 1. The answer of probability will be always lied between 0 to 1, right? Probability का answer हमेशा 0 से 1 के बीच में lie करेगा. That you might be knowing also, right? You might be knowing this case also, right? आप लोग को सबको समझ में भी आया होगा ये कि हमेशा probability का answer 0 से 1 के बीच में आता है. Right? So I have listed from the events from A to G, and I hope you got what all these events and what are their probabilities, right? आपको इतना समझ में आया होगा. चलिए guys, आप लोग सही बता दीजिए इधर तक आपको समझ में आया how I have written the probabilities of all the events. What is the meaning of event? What is sure event? What is impossible event? इधर तक एकदम easy लगा आप लोग को, right or not? Understand? इसको understand करना एकदम easy लगा ना आप लोग इधर तक? Yes or no? Yes, very good. इधर तक आप लोग को easy लगा. Okay, then अब हम लोग आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे बढ़ते, इस concept को आगे लेके जाते. Now what I will do mix and match of all these events, right? I will do mix and match. Right? So what I will do mix and match of all the events. So for that, what I will do, I am just first, I am recalling what is the meaning of union, guys. What is the meaning of union? What is the meaning of intersection? And what is the meaning of complement? ठीक है? Just मैं आपको ये recall करवा रहा हूँ. Union मतलब A union B. Set A union B is what? Set A union B will contain elements X. Will contain element X. The meaning of this dash. The meaning of this dash is such that set A union B will contain element X such that X belongs to A or X belongs to B or both, right or not? X belongs to A or X belongs to B, or you can write as a both, right? So whenever or is coming, no, you have to find the union of that. Whenever or is coming means A में भी होना चाहिए, A में होगा या तो B में होगा तो भी मैं A union B में लिखूंगा. इसका मतलब ये होगा A में होगा या B में होगा तो भी मैं A union B के अंदर लिखूंगा इसको जब मुझे A union B की बात की जाए, right? So that means what? That means what? You understand over here? That means what? If I am having word at least one, right? अगर मेरे पास ऐसा बोला at least एक सेट में हो जाए वो एलिमेंट, उसका मतलब ही ये हुआ ना एक सेट में हो जाए at least one set.
So that meaning is A union B. उसका मतलब ही ये होता है, at least one का मतलब हो गया A union B. At least one. आप देखो यार, कोई एक सेट में हो जाए, कोई A में हो जाए या तो B में हो जाए, एटलीस्ट वन, दोनों में हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक में होना चाहिए. सो एटलीस्ट वन, द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट वन, दैट मींस इट इज अ यूनियन ऑफ सेट्स. इट इज यूनियन ऑफ सेट्स. क्लियर गाइस? यूनियन ऑफ सेट्स समझ में आया आप लोगों को? यूनियन ऑफ सेट्स, व्हाट इज दैट मीनिंग, राइट? नाउ सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? इट इज प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी विल हैव एलिमेंट्स x such that elements x such that x belongs to A and x belongs to B. Means your element should be considered, your element should be in both the set, right? So if it is written in both, right, in both, so it will be always used and. For intersection it will be always used as and. एंड हमेशा यूज किया होगा इंटरसेक्शन के लिए. आप लोग के पास हमेशा एंड वर्ड जो है वो यूज किया होगा, ठीक है? एंड वर्ड विल बी ऑलवेज यूज फॉर इंटरसेक्शन. क्लियर है गाइस? ये आप लोगों को क्लियर है? यस और नो? क्लियर है? yes or no, right? So and word will be always used for intersection, correct? Okay, then the third thing is complement. Complement will consist of the elements x such that x does not belongs to A. X does not belongs to A. आगे लिख सकते हो x belongs to sample space. Complement मतलब x does not belongs to A but x belongs to sample space, or you can also call it as a universal set, right or not? मतलब जो एलिमेंट A के अंदर नहीं है बट यूनिवर्सल सेट के अंदर है, उसको हम बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट. उसको हम बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट. मतलब इन शॉर्ट आप लोग इसको बोल सकते हैं नॉट ए या नॉट ए. या तो तुम लोग कभी कभी अगर सेट बी होता, अगर सेट बी ऐसा होता तो आप लोग बी कॉम्प्लीमेंट बोलते तो नॉट बी, राइट? ऐसा भी बोल सकते हैं आप लोग. सो नॉट ए, दैट मीन्स इट इज ए कॉम्प्लीमेंट. दैट मीन्स इट इज a complement, guys. That means it is a complement. Clear है guys? What is the meaning of this? So you can see over here, अगर आप लोग देखोगे इधर से, अगर तुम लोग इधर से देखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग द एलिमेंट्स ए एंड बी एंड आई एम मेकिंग द यूनियन ऑफ दिस. आई एम मेकिंग ए यूनियन बी. मींस जो भी हमने इवेंट ए और बी देखा था ना, सॉरी, आई एम टेकिंग नॉट ए एंड बी, आई एम टेकिंग बी एंड सी, राइट? आई एम टेकिंग बी एंड सी. I am taking the elements B and C over here. You guys can see over here. ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ इधर से, मैं जो है ना अब एलिमेंट्स B और C ले रहा हूँ, ठीक है? सॉरी, इवेंट्स B and C ले रहा हूँ. I am taking events B and C. So if I am taking the elements of event B and C, if I am taking B union C, then you can say that you are having the B. Now you can say over here that the B are the elements for even outcome and C is the event of having odd outcomes, right or not? So B union C, if you can write, then the B union C will be what? B union C will be what? So you will get over here, it is 1 2 3 4 5 and 6. So you will get this B union C as 6, right guys? You will get as a B union C as 6. Now if you consider this thing, if you see this thing, you got B union C, you got B union C as a sample space. You got B union C, आप लोग का आंसर सैंपल स्पेस आया, राइट? B union C आपका आंसर जो है वो सैंपल स्पेस आ गया. And when two events, if the union of two events are say, if your union of two events, if it is giving you a sample space, then those two events are said to be mutually exhaustive events. So therefore you can write B and C are mutually, B and C are what? Mutually exhaustive events. These are very important terms, guys. These are very important terms. Exhaustive events. अगर कोई भी इवेंट्स का यूनियन तुम लोग को सैंपल स्पेस वापस दे देगा, then such events are called as a mutually exhaustive events. Right or not? Now if you guys find B intersection C, if you guys find B intersection C, then you can see over here B is the set of odd outcomes and C is the set of even outcomes, right or not? Sorry, B is the set of even outcomes and C is the set of odd outcomes. So if you find B intersection C, it will always give you null set. That means what? B and C are mutually, you can also call B and C as what? Mutually exclusive events. You can also call B and C as a mutually exclusive events, right? These are the very important terms, right? So if the union of two events will give you a sample space,
then those two events will be called as the mutually exhaustive events. Now it is not necessary that it should be two events, right? If I am having if I am having three units, three events, and if that three events are giving me a sample space, if union of that three events is giving me sample space, then I can say that all that three events are mutually exhaustive events. If I'm getting their intersection as null set, then I will say that those two events are mutually exclusive events. These are the definition of mutually exclusive. Okay, mutually exclusive भी बोल सकते, कहीं कहीं बुक में इसको disjoint event भी बोल सकते, कहीं कहीं बुक में इसको disjoint events भी लिखा होता है, सो हम लोग इसको disjoint events भी बोल सकते हैं. I hope you guys got clear about this. Now, guys, are you clear what is the meaning of mutually exhaustive events and what is the meaning of mutually exclusive events? अगर intersection null set exclusive, अगर union sample space, अगर union sample space हो गया, if you are having two events whose union is sample space, अगर आपको दो event का union sample space मिल गया, उसको म्यूचुअली एग्जॉस्टिव बोलेंगे. और अगर इंटरसेक्शन नल सेट मिल गया ना, तो उसको म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बोलेंगे. आई हैव रिटन द डेफिनेशन ओवर हियर आल्सो फॉर यू गाइस. सी ओवर हियर, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स मींस टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली exhaustive if their union gives sample space, and two events are said to be mutually exclusive if the occurrence of one event excludes the occurrence of other event, right? मतलब अगर तुम्हारा एक event का occurrence दूसरे event को नहीं होने देगा, right? Means if I am tossing a dice and if I am getting even number, then it is excluding of getting the odd number. It is excluding getting an odd number, right or not? Clear हो रही है बात? ठीक है. अगर आपको इवन नंबर मिलने वाला है ना, तो आपका ऑड नंबर पक्के से नहीं आएगा, राइट? सो इफ यू आर गेटिंग, इफ द इवन नंबर इज कमिंग, देन इट विल एक्सक्लूड द ऑड नंबर, एंड इफ ऑड नंबर इज कमिंग, इट विल एक्सक्लूड द इवन नंबर. सो दैट इज व्हाई यू कैन कॉल दैट टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. इट विल बी एक्सक्लूसिव, इट विल एक्सक्लूड वन ऑफ द इवेंट्स, right or not? It will exclude one of the events. So that is the meaning of exhaustive and exclusive events, right guys? I hope you got this point about the mutually exhaustive events and exclusive events, guys. I hope you got this point. Yes or no? Please tell me, guys, yes or no. These are the basics of probability, and you should be very strong in the basics for solving the most of the problems of probability, right? Clear hai, guys? Chaliye, I want a very good response, guys, right? Very good. Chaliye, sab log please अच्छे से रिस्पॉन्ड करिए. आप लोग, तो आप लोगों को मुझे समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बिकॉज this is somewhat tricky topic, right, which I am discussing over here. This is some of tricky topic which I am discussing over here, so it should be understand by you, otherwise you will get bored in this session, right? अगर आपको समझ नहीं आया ना, तो आप लोगों को seriously session will be filled like boring for you, right or not? Okay. करेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग आगे बढ़ते. नाउ आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए सर इधर, कि जो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है, क्या वो सारी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है या नहीं? तो आप क्या कर लो यार, एक ट्रायल कर लो ना, एक ट्रायल कर लो. चलिए अब अगर हम लोग डी यूनियन ई लेते, चलिए हम लोग इधर से करेंगे ना, इधर से हम लोग क्या करते हैं, डी यूनियन ली एक बार लेते हैं. डी यूनियन ई आपके लिए एक और एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं. डी यूनियन ई, अगर मैंने डी यूनियन ई लिया, अगर आप देखते हो इधर से D union E, तो 1 2 3 4 5 6, again I will get D union E as 1 2 3 4 5 6. D union E आपको again 1 2 3 4 5 6 मिला. Now you can say that again it is sample space, again it is sample space, guys, again it is sample space. So D and E again are, D and E are again mutually exhaustive events. D and E again are mutually exhaustive events, mutually exhaustive events, right? D and E. But if you find D intersection E, guys, if you are finding D intersection E, now can you see D intersection E? What will be your answer? See, D intersection E will be your 3 and 4. D intersection E will be your 3 and 4. Guys, you can see D intersection E आपका 3 and 4 हो जाएगा. And if you guys see, if you guys can see over here, D intersection is 3 and 4. That means what? It is not equal to null set. It is not equal to null set. So you can say that though D and E are mutually exhaustive events, it is not compulsory that both events will be mutually exclusive event. They are these two processes are independent process. ऐसा जरूरी नहीं होता कि exhaustive events हो जाए वो exclusive हो जाए, या exclusive events जो हो जाए वो exhaustive हो जाए. ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? You have to just satisfy this condition. If you get D union E, if you get the union answer as a sample space, then it will be mutually exhaustive. And if you are get intersection answer, if you are getting the answer of intersection as
null set, then it will be mutually exclusive. Then it will be mutually exclusive. Right, guys? Right, guys? Okay. Can you you got this thing over here, guys? You got this thing over here? Yes or no? Just tell me yes or no, guys. Yes or no? Okay. Okay, correct, correct. Now one more thing I want to add. Now one more thing I want to add, guys. One more thing. If your B and C, if your B and C are mutually exclusive event, that implies what? That implies what? Probability of B union C would be always one. That implies what? Probability of B union C would be always one. Why? Why? Because B union C is the set of all the elements of sample space, and probability of sample space is always considered to be one, right or not? Probability of sample space is always one. So if B and C are, or if any events are mutually exclusive events, then the probability of that union of that events will be always one. Probability of the union of that events will be always one. Correct or not, guys? राइट समझ में आया गाइस? समझ में आ रहा है सब लोगों को? यस और नो बताइए मुझे, यस और नो. करेक्ट, यस और नो. वेरी गुड. चलिए, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, वेरी गुड. क्लियर, क्लियर है सब लोग को? वेरी गुड. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, सी ओवर हियर. नाउ can you say that now my question is what? Can you say that probability of D union E is equal to probability of D plus probability of E? Probability of D or probability? Can you say this thing over here? So for this I'm checking that what I'm getting, the LHS part. If you take the LHS part, now probability of D union E, probability of D union E is your what? So you will write over here, from this case only, probability of D union E is 6 by 6, that is 1, because the D is having the elements of all sample space and probability of sample space is 1. And if you are taking the RHS part, the probability of D plus probability of E, and now you have already calculated what is the probability of D and probability of E. So here it is written probability of D. Now what you have written probability of D over here? You can see over here, probability of D is 2 by 3 and probability of E is 2 by 3. So probability of D is 2 by 3 and probability of E is also 2 by 3, right? It is correct or not, right? So you can see over here. So probability of D plus probability of E is equal to 2 by 3 plus 2 by 3, and it will give you 4 by 3, guys. It will give you 4 by 3, and it is not equal to 1, guys. It is not equal to 1, right? It is not equal to 1, right? Right. So that means what? I cannot say probability of D union E as probability of D plus probability of E. Why it is happening like that? Because you can see that there are you can see that on counting the probability of D, you have considered the elements, the 3 or 4 in D also, and on counting the probability of E, you have considered the elements 3 and 4 in E also. So on counting probability of D, you have counted 3 and 4 element one time, and again you are counting that element 3 and 4 in on counting the probability of E. Means आप लोग 3 और 4 एलिमेंट दोनों बार काउंट कर रहे हो, डी में भी काउंट कर रहे हो और ई में भी काउंट कर रहे हो. इसलिए आप लोग का जो आंसर है ना, इसलिए प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होता है वो आप लोग का सही नहीं आता है. किसी एक में काउंट कर लो. यू कैन यू काउंट दिस 3 by 4 इन डी, एंड इफ यू आर नॉट काउंटिंग इन 3 by 4 इन ई, देन व्हाट कैन आई राइट? अगर मैं किसी एक में काउंट करता हूं, या तो दोनों बार काउंट कर लो, पर एक बार आप काउंटिंग सब्ट्रैक्ट कर लो. मतलब अगर इफ आई वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डी यूनियन ई, सो आप लोग क्या करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी को एक बार निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एक बार निकाल दो, बट उसमें से आपने उसके जो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट है उसको दोनों में काउंट किया होगा, तो एक बार उसके इंटरसेक्शन एलिमेंट के तुम प्रोबेबिलिटी जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लो. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन से सब्ट्रैक्ट कर लो, एंड देन यू विल गेट दिस रिजल्ट एज probability of D union E will be always equal to probability D plus probability E minus D intersection C. Just check our answer. So D was 2 by 3 and probability of E was 2 by 3. And if you find D intersection E, and if I am writing over here the probability of D intersection E, that will give me 2 by 6, that is 1 by 3.
2 by 6, that is 1 by 3. So I will subtract minus 1 by 3 over here. So this is 2 plus 2, 4 minus 1 by 3. That will give me 3 by 3. See over here, I am getting the answer of RHS. I am getting the probability of D union E. So this thing is considered as the addition theorem of probability. इसको हम बोलते हैं addition theorem of probability. I hope you guys got this thing clear in your mind. I hope you guys got clear in your mind, right or not? Correct. Correct. Very good. They are not mutually exclusive events. So that is why correct. Intersection is not equal to 0. So you cannot write probability of D union E is equal to probability of D plus probability of E. But if it is mutually exclusive, then their intersection will be null set. At that time, you can write probability of D union E as the probability of D plus probability of E. Correct. I hope you guys got clear about this thing. What is the addition theorem, right? Suppose समझ में आया सब लोगों को. I have written over here also in general. I've written the formula for that A union B probability is always probability of A plus probability of B minus the probability of A intersection B minus the probability of A intersection B, right guys? Clear हुआ सबको? हाँ या ना बताइए please. I want a very good response from you all guys. चलिए बताइए मुझे, clear हुआ? Okay. Sorry. So you guys got clear, right? You guys got clear. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे. Okay, so now I am having one question, guys. Now I am having a detailed question which give me the total concept about the two events. The total concept about the two events. You can see over here, I am having the events. The probability of occurrence of two events A and B are 0.4 and 0.7. See, now the given is what over here? The given is what? See over here. What I am given. So I have written that the probability of A is given by 0.4 and the probability of B is given as 0.7, right? And they occur simultaneously, means the probability of A intersection B simultaneously हो रहा है ना, दोनों इवेंट साथ में हो रहा है ना, तो साथ में होने की प्रोबेबिलिटी जो है उनकी 0.3 है, साथ में होने की प्रोबेबिलिटी है उनकी 0.3. Determine the probability that at least one, मैंने बोला था एटलीस्ट वन, अगर पूछे आप लोग को एटलीस्ट वन मतलब ए हो जाए या तो बी हो जाए, ए हो जाए या तो बी हो जाए. अगर दोनों हो जाते तो भी कोई बात नहीं है, बट ए हो जाए या तो बी हो जाए, मतलब एटलीस्ट वन. और एटलीस्ट वर्ड जब भी यूज होता है, दैट मींस व्हाट? You want to find out the probability of union, guys. You want to find out the probability of union, right or not? You want to find out probability of union, right or not? Right or not, guys? Are you getting this thing? At least one of them occurs. At least one of them occurs. Just if you understand the language in probability very well, then it will give you 50% of your solution, right? मुझे at least बोला है मतलब किसी एक बार हो जाना चाहिए. इवेंट ए और बी में से कोई भी इवेंट एक बार हो जाए, उसको हम एटलीस्ट बोलेंगे, एटलीस्ट वन टाइम बोलेंगे. वेरी गुड, आप लोग आंसर निकाल रहे हो, दैट इज वेरी गुड. सो इफ यू कैन सी द वेन डायग्राम ओवर हियर, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी अकर्स. So the shaded portion is about your at least one A union B, right? Shaded portion is your at least one of them occurs. So I can write here probability of A union B. At least one means probability of A union B. So what you are getting, this is equal to, sir, probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Probability of what, sir? A intersection B. ठीक है? Right? Again, I am telling you at least one. श्रुत इट इज गिवन एटलीस्ट वन, मतलब ए भी हो जाना चाहिए, मतलब किसी दो में से कोई एक हो जाना चाहिए, या तो ए हो जाना चाहिए या तो बी हो जाना चाहिए. और एटलीस्ट वन बोला है तो अगर दोनों भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम, पर एक तो होना ही चाहिए. सो ए और बी, एंड इफ यू आर टेलिंग ए और बी, दैट मींस इट इज यूनियन. इफ यू आर टेलिंग ए और बी, दैट मींस इट इज यूनियन, राइट और नॉट श्रुत? नाउ अंडरस्टूड, राइट? सो दिस इज 0.4 plus 0.7, 0.4 plus 0.7 minus 0.3 minus 0.3. So this is 0.4, so 0.11, and 0.11 minus 0.3, this is your 0.8. So A union B का probability जो है, A union B का probability जो है, ठीक है, right? A union B का probability जो है वो आपका 0.8 आ जाएगा, right? Is that clear? Is that clear? Right? A union B का probability, ये पूरा है ना, ये पूरा डायग्राम A और B, मतलब A के अंदर का भी सारे एलिमेंट्स और B के अंदर भी सारे एलिमेंट्स सारे आ जाएंगे, राइट? ए के अंदर भी सारे एलिमेंट्स और बी के अंदर के भी सारे एलिमेंट्स सब आ जाएगा. क्लियर हो रहा है ये बात? नाउ इफ यू कैन सी ओवर हियर,
the probability of A union B is 0.8. It is not 1. That means this A and B are not mutually exhaustive events, right? ये A और B जो हमने इधर कंसिडर किया ना, वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं है. अगर एग्जॉस्टिव होते ना तो A यूनियन B का आंसर 1 आ जाना चाहिए, बट इधर मेरा आंसर कितना आ रहा है? 0.8 आ रहा है. मींस दे आर नॉट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स. क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट गाइस? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये बताइए मुझे, फर्स्ट एटलीस्ट वन ऑफ A और B अकर्स. समझ में आया सब लोग को? यस और नो? वेरी गुड. चलिए प्लीज गाइस, आप लोग यार इंटरेक्ट थोड़ा सा मुझे बोलते रहना, राइट और नॉट? ठीक है, कोई बात. चलिए, बोथ ए एंड बी अकर्स, यार उसकी तो प्रोबेबिलिटी दी है ना. बोथ ए एंड बी अकर्स मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज 0.3 गिवन. बोथ ए एंड बी अकर्स, that is probability of A intersection B. Probability of A intersection B, that is given 0.3. Clear guys? Clear है ये सबको? Right? Second part is clear. So that means if you can see over here, I have written that I have drawn here the Venn diagram. So Venn diagram मतलब सिर्फ इतना सा portion, both occur होने का सिर्फ इतना सा portion होगा, इतना सा portion. So in the Venn diagram, so A and B, A intersection. This is the Venn diagram of what? A intersection B. Right? So if you want to master insights, then you should have to be master in Venn diagram. ठीक है? You should be have to be master in Venn diagram. Clear है guys? चलिए, समझ आया सब लोग को? ये चीज समझ में आया ना? हाँ या ना बताइए. Right? You guys got clear about this thing? Very good. चलिए. Now, what is only A occurs? Now, what is only A occurs? What is the probability of only A occurs, guys? A only, probability of A only. मतलब सिर्फ A ही होना चाहिए. सिर्फ A होना चाहिए. So if you can see the Venn diagram over here of only A occurs, only A, you cannot call it as you cannot take the portion of B also. A single portion of B आप लोगों को भी नहीं लेना है. एक single portion B का भी नहीं लेना है. Probability of only A occurs. Shruti, here you are doing some mistake over here. This is the probability of A which is given in the question. Probability of A is which is given in the question. It is having all that elements which is in the set A, which is in the set A, means it is also count the elements which is in A intersection B region also. But here it is only A. So probability of A only will give you the 1 minus the probability, probability of A only will give me the probability of A, the probability of A minus probability of what? A intersection B. I cannot have a single region, of set B. सिर्फ A का रीजन, सेट B का थोड़ा सा भी रीजन, भले वो कॉमन रीजन हो जाए, भले वो A के अंदर हो जाए, बट उसका सिंगल रीजन मुझे नहीं चाहिए वहां पे, right or not? So minus A intersection B. So this will give me 0.4. I think probability of A is 0.4, right or not? Yes. 0.4 is the probability of A, minus you can write A intersection probability. So A intersection की probability थी 0.3. So your answer will get, your answer will be 0.1. I hope you guys got cleared about this thing, right? आपका ये आंसर हो गया 0.3. Sorry, 0.1 is your answer. तो इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर आपका 0.1 आ गया. Probability of only A occurs. Probability of only A occurs. Guys, clear हो रहा है सबको? Concept clear हुआ है इधर तक? Only A occurs तक का वाला concept आपको clear हो गया ना? Yes or no? बताइए मुझे. Yes or no? Are you guys got cleared about this concept? Right? Clear है ये? Okay. ठीक है, चलिए. Right? You guys got clear about this thing. Now next, आगे. Very good. चलिए आगे हम बढ़ते हैं. आगे अगर हम बढ़ेंगे, exactly one of A or B occurs. Exactly one of A or B occurs मतलब यार या तो A होना चाहिए, one of A or B मतलब A हो जाए या तो B हो जाए. Exactly one of A or B occurs. Exactly one of A or B occurs. Now you just plot the Venn diagram. If you are not knowing anything, whatever statement it is written, from that just draw a Venn diagram, and once you get the Venn diagram, I can easily get the answer from the Venn diagram. Sir, it is if I'm seeing the Venn diagram, it is what? It is the probability of A union B. Exactly one का आंसर कितना होगा? Probability of A union B minus probability of A intersection B. मतलब मुझे सिर्फ एक ही बार होना चाहिए. दोनों में जो हो रहा है वो रीजन आप काट रहे हो. दोनों बार अगर हो रहा है, दो A और B दोनों हो रहा है, वो रीजन तुम काट रहे हो वहां से. सो दैट मींस A यूनियन B का आंसर आपका 0.8 था और A इंटरसेक्शन B का आंसर आपका 0.3 था. तो एग्जैक्टली ऑफ A और B अकर्स, उसका आंसर 0.5 आ गया. उसका आंसर आपका 0.5 आ गया. आई होप यू गाइस गॉट क्लियर्ड अबाउट दिस थिंग गाइस. सबको समझ में आया? यस और नो बताइए मुझे. सबको समझ में आया?
राइट और नॉट? सबको समझ में आया? ओके गाइस, सबको समझ में आ गया आप लोगों को, राइट और नॉट? और यू कैन ऑल्सो राइट प्रोबेबिलिटी, और यू कैन ऑल्सो राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली प्लस व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओनली। आप देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओनली। अगर आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली, मैं डायग्राम से पता किया ना, ए ओनली का प्रोबेबिलिटी आपका 0.1 था, ए ओनली का प्रोबेबिलिटी आपका 0.1 था, और बी ओनली का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर दोगे, सो दिस विल गिव मी माय प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज 0.1, और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी थी भाई? बी की प्रोबेबिलिटी 0.7 थी, बी की प्रोबेबिलिटी 0.7 माइनस 0.3, तो ये भी आंसर गाइस मेरा 0.5 आ गया। देखो ये भी आंसर गाइस 0.5। देयर आर मेनी वेज, if I am just drawing the Venn diagram, then there are many ways to solve, there are many ways to solve, right or not? Clear है guys सबको? हाँ या ना बोलिए। Clear, right? You can solve by this also, a only plus probability of b only, a only plus probability of b only। Clear, right or not? Yes, very good। चलिए, बहुत अच्छी बात है, right? Next चलिए आगे। Clear. Now what is exactly one of, okay, that we have done. Now we have to find at most one of a or b occurs. Now just understand, at most one of a, maximum एक ही होना चाहिए, मैक्सिमम एक होना चाहिए, एट मोस्ट वन ऑफ ए, मैक्सिमम ए, मैक्सिमम वन, मतलब अगर ए हो जाए, देखो एट मोस्ट वन ऑफ ए, लैंग्वेज को समझो, ए हो जाए अगर, ए अकर्स, ए अकर्स, और यू कैन से बी अकर्स, और यू कैन से बी अकर्स, और एटमोस्ट बोला है ना, तो ए और बी में से कोई भी ना हो जाए तो भी चलेगा, और नो इवेंट अकर्स, और नो इवेंट अकर्स, वो भी हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं ना, इसमें वो भी काउंट कर सकते हैं ना, ए और बी में से कोई भी नहीं हुआ, एटमोस्ट बोला है ना वन, तो ए हो जाए एटमोस्ट वन, ए हो जाए एटमोस्ट एक इवेंट, एटमोस्ट वन ऑफ ए और बी अकर्स, ए अकर्स और बी अकर्स और नो इवेंट अकर्स, मैक्सिमम वन, वन से कम चलता है ना, एक से कम चलेगा, एक से कम मतलब नो इवेंट, सो यू कैन से no event occurs. Now do you understood what is this thing, a occurs or b occurs or no event occurs? Do you understood? Now just I will mark this thing, so you can say that a होना चाहिए, फिर बोलोगे at most one, मतलब a होना चाहिए, बी होना चाहिए, या तो कोई इवेंट नहीं होना चाहिए, बी होना चाहिए या तो कोई इवेंट, ए अकर्स, मतलब ये ओनली ए अकर्स है, ए अकर्स मतलब आपको समझना है ओनली ए अकर्स, राइट और नॉट? सो अगर मैं इसमें आपको सिंपल सा, अगर इसको वेन डायग्राम में अगर मैं बता दूं आप लोग को, तो आपके पास हो सकता है, देखो आपके पास ये चीज क्या हो सकती है, सो यू कैन से दैट ए अकर्स सर, तो सिर्फ ए हो सकता है, या आप बोल सकते हैं सर बी हो सकता है सर, या तो नन ऑफ दिस इवेंट ए और बी अकर, मतलब ये पूरा रीजन बाहर का, ये पूरा रीजन बाहर का, ये पूरा रीजन बाहर का हो गया गाइस, ये पूरा रीजन बाहर का हो गया। Now what is the answer? Now what is the answer? You can easily tell me the answer now. Once I get the Venn diagram, you can easily get the answer. See, I have written over here at most this region, at most. So now you can easily give me the answer, sir. It is the probability, at most one event occurs. It is the probability of sample space minus what, the probability of A intersection B, probability of A intersection B. This is 1 minus probability of point A intersection B is 1 minus 0.7. So you will get as 0.3. You will get as what? Sorry. It is 1 minus 0.3. It is 1 minus 0.3. You will get 0.7. It is 1 minus 0.3. You will get 0.7. It is 1 minus 0.3. You will get, okay. You will get 0.7. क्लियर ये बात, ये सब लोग को, ठीक है, ये क्लियर हो गया, राइट और नॉट? सो अगर तुम ये रीजन को भी देखोगे ना गाइस, अगर तुम ये रीजन को भी देखोगे, दिस इज द रीजन ऑफ व्हाट, सी ओवर हियर, अगर तुम ये रीजन को देखोगे तो ये रीजन आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वाला रीजन भी हो गया गाइस। सोचो तुम लोग, ये रीजन आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वाला, आई एम टेकिंग यू इन सम अनदर डायरेक्शन, राइट और नॉट? I am taking you in some another direction. If I want to suggest what is A complement, now see what is A complement. So A complement would be the region which is not in A, which is not in A, right? So this whole region will be in A complement. I am marking with that red color, right? मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, A complement का रीजन मार्क कर रहा हूँ, जो A में नहीं है, जो A में नहीं है वो सारा रीजन मेरा A कॉम्प्लीमेंट में होगा, जो A में नहीं है वो सारा रीजन मेरा A कॉम्प्लीमेंट में होगा, ये A कॉम्प्लीमेंट में हुआ, राइट और नॉट? नाउ अगेन आई एम मार्किंग द रीजन ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, नाउ आई एम मार्किंग दैट विद सम अनदर कलर, नाउ आई एम मार्किंग दैट विद ब्लैक कलर, सो यू कैन सी ओवर हियर, जो मेरा B में नहीं होगा, B में नहीं है, B कॉम्प्लीमेंट मतलब B के अंदर नहीं है, ठीक है, B में नहीं है, राइट ओवर हियर, राइट ओवर हियर, यू कैन सी राइट ओवर हियर गाइस, राइट
बी में नहीं है। अगर तुम ये दोनों का यूनियन ले लो ना, यूनियन ले लो, तो मुझे रेड और ब्लैक पोर्शन का यूनियन चाहिए, रेड और ब्लैक पोर्शन। मतलब कहीं पे भी अगर तुम्हें ब्लैक लाइन भी दिख जाए या रेड लाइन भी दिख जाए ना, वो पोर्शन तुम्हें इंक्लूड करने का, तो आपका पोर्शन कौन सा बचेगा? ये देखो आप लोग का जो ये व्हाइट कलर का पोर्शन जो है, ये वाला जो पोर्शन है उसमें एक भी लाइन नहीं है, तो वही सिर्फ आपका बाकी रहेगा, बाकी सारा एरिया आपका इंक्लूड हो जाएगा। सो यू कैन राइट दिस थिंग एज एट मोस्ट वन ऑफ ए और बी अकर्स एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। उसको ऐसा भी तुम लिख सकते हो। तो इधर से भी मेरा आंसर निकल सकता है, सर आई नो द डी मॉर्गन्स लॉ। यस यस गाइस, यू नो व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ एक सेट के अंदर आप लोग पढ़ते थे। सर मेरा डी मॉर्गन्स लॉ था, अगर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिख देता हूं, तो सर इट इज ऑलवेज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। And if I am writing A complement union intersection B complement, then it will be always A union B complement. D Morgan's law 11th standard से हम पढ़ के आ रहे D Morgan's law. So probability of A union B का complement आप लिख सकते हो। इस चीज को तुम ऐसा भी लिख सकते हो, सर it is the probability of A intersection B, A intersection B का complement। और आप देख ही रहे हो ना guys, you can see over here in the diagram कि A intersection B का complement मतलब A intersection B नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो जाए। So this is the diagram is same as probability of A intersection B complement, and always the probability of A intersection B complement will be 1 minus probability of A intersection B. So I can get over here 1 minus probability of A intersection B is 0.3 guys, 0.3. So you will get over here 0.7 again. You will get over here 0.7 again. Right? I hope you guys got clear about this concept, guys. You guys got clear about this concept. Yes, De Morgan's law. So this De Morgan's law, A complement union B complement is A intersection B complement, and A complement intersection B complement is A union B complement, guys. Is A union B complement. Clear हो रहा है बात सब लोग को? हाँ या ना बताइए प्लीज गाइस। समझ में आ रही है? अरे बताइए प्लीज। So it is about 1 hour. And I hope you guys are enjoying this session, right guys? समझ में आ रहा है ना आप लोग को? समझ में आ रहा है आपका? सारी चीज क्लियर हो रहा है ना? You will get I am taking to some another level from the basic I have started, and I am taking you to another level, right guys? I am taking to another level. So आप लोग का रिस्पॉन्स मुझे चाहिए रहेगा बीच बीच में, ठीक है? चलिए वेरी गुड। चलिए आगे अब हम बढ़ेंगे। वेरी गुड। सो आप लोग को ये पता चला ना, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वाला ये रीजन हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वाला भी ये रीजन हो गया, ठीक है? चलिए अब लास्ट जो पार्ट था उसके अंदर हम लोग चलते हैं। लास्ट पार्ट जो उसके अंदर जो पूछा हुआ था ना, वो कौन सा पूछा हुआ था? कहाँ गया भाई क्वेश्चन? Okay, so that was none of A or B occurs. Okay, none of A or B occurs, guys. None of A or B occurs. मतलब A भी नहीं हुआ और B भी नहीं हुआ। A भी नहीं हो गया और B भी नहीं हो गया, मतलब A और B वाला रीजन आना ही नहीं चाहिए। A भी नहीं हुआ और B भी नहीं हुआ, मतलब A और B वाला रीजन जो है वो आपका आना ही नहीं चाहिए। That means what? That means what? If I am taking the Venn diagram for that, A और B आया ही नहीं, तो इसका आंसर तो तुम सीधा ही बोलोगे ना, it is what? It is sir, the probability of sample space minus probability of A union B. Probability of sample space minus probability of A union B, right or not? So you can write this as a 1 minus probability of A union B, आपका 0.8 आ रहा था, so that will give you 0.2. That will give you 0.2, right or not? So this thing you can also write, this is what the probability of A union B. ये आपको ऐसा ही बोल सकता है ना, probability of A union B का complement. This can also tell you the probability of A union B complement. So this is again 1 minus probability of A union B. Again, this is 1 minus probability of A union B. So 1 minus 0.8, 1 minus 0.5, that is 0.2, 1 minus 0.8, right? 1 minus 0.8. So if you want to find probability of none, if you want to find probability of none, it will be always equal to 1 minus probability of at least 1. ये याद रखना गाइस, ये मेरा स्टेटमेंट जो है ना, ये याद रखना। आप लोग को इधर से दिख रहा है ना, अगर मुझे नन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, then it will be always equal to 1 minus probability of at least 1. And if I want the probability of at least 1, then I can get it will be always equal to 1 minus probability of none. 1 minus probability of none. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आगे जाके हम जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट मैं बहुत जगह पे यूज करूंगा। समझ आ रही बात? नन ऑफ ए और बी अकर्स, नन ऑफ ए और बी अकर्स। क्लियर हो रही है बात? Right guys, are you guys got clear about this thing? What is the probability of none? 1 minus probability of at least 1. 1 minus probability of at least 1. So जितनी भी लैंग्वेज यूज होती है ना, मैंने वो सारे एक क्वेश्चन के अंदर आपको बता दी गाइस।
जितनी भी लैंग्वेज यूज होती है, एटलीस्ट वन मीन्स यूनियन, एटलीस्ट वन मीन्स यूनियन गाइस। अभी तो मैंने बताया ना आपको, एटलीस्ट वन मतलब यूनियन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ ए और बी अकर्स, दैट मींस वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, राइट। सो एटलीस्ट वन को हम बोलते हैं यूनियन बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर सारा लैंग्वेज बता दिया, मैंने आपको एक क्वेश्चन के अंदर सारी लैंग्वेज बता दिया। सो द व्हाट इज द अल्टीमेट एम नाउ? The ultimate aim is what? The ultimate aim is what? If you are having the question like this about this union and intersection and all that thing, what you used to do, just draw a Venn diagram and try to answer by solving that Venn diagram. That is the correct way to answer any probability question if they are given, if they are mix and match two events like this. और आपको उसके लैंग्वेज के ऊपर से ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ गया, राइट? आप लोग को ये याद रहेगा ना, समझ में आया ना सबको? वेन डायग्राम से आंसर करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। वेन डायग्राम से आंसर करोगे बहुत ही इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ओके, नाउ आई एम हैविंग 3 सेट्स गाइस, आई एम हैविंग 3 सेट्स, राइट। अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाया वो 2 सेट के लिए था, बट नाउ आई एम हैविंग 3 सेट्स एंड आई हैव मार्क्ड द डिफरेंट रीजन ओवर हियर। यू कैन जस्ट सी ओवर हियर, so you can see this yellow color region is in set A but not set B or C, मतलब ये सिर्फ ओनली ए का रीजन है, ये ओनली ए का रीजन है। ये जो आप ब्लू कलर का रीजन एक दे रहे हो, दिस इज ओनली फॉर बी रीजन, and this pink color region is only C region. I have written over here with the arrow mark, not A and B, not A or B, right? I have written over here. Now this is the intersection of A and C. So in sets A and C, but not set B, not set B. Now this pink, this color is set B and C, but not set A, but not set A, right or not? And this is what in sets A and B, but not set C. And this is the intersection of all the three, in all the 3 sets. And this is not in any 3 sets. The outside region is not in any 3 sets, right? Outside region is not in any 3 sets, right? तो अगर 3 सेट के बारे में आया तो हमारे पास टोटल कितना रीजन हो गया? So this is region number A, this is region number B, this is region number C, this is region E, sorry, A, B, C, this is region number D, this is E, and this is F, and this is G, right? Total this much regions are there. A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, right? So total there are 3 plus 3, 6, 7 regions you will be get created when there are 3 sets, guys. 7 रीजन टोटल क्रिएट हो जाएंगे जब आपके पास 3 सेट्स होंगे, जब आपके पास क्या होंगे? 3 सेट्स होंगे। क्लियर और नॉट? यस और नो बताइए मुझे। जस्ट पता चला ना आप लोगों को कैसे बाइफर्केशंस होते हैं रीजन्स के, कैसे बाइफर्केशन होते हैं, ये तो ऑलरेडी सबको पता ही होगा, ठीक है। आगे देखते चलिए। अब मेरे पास ये क्वेश्चन था, देखो गेट 2015। नाउ हाउ मच मार्क क्वेश्चन इट वाज आस्क्ड? 2 मार्क क्वेश्चन वाज आस्क्ड। हियर इट इज रिटन द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट पासेस इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर M, P and C रिस्पेक्टिवली। ओके, मुझे 3 की प्रोबेबिलिटी दी है कि अगर मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में या केमिस्ट्री में पास हो रहा है स्टूडेंट, तो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दोस स्टूडेंट्स आर M, P and C रिस्पेक्टिवली। नाउ ऑफ दिस द स्टूडेंट्स हैव 75% चांस ऑफ पासिंग इन एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वन के अंदर पास होना 75%, मतलब you have to find the probability of mathematics union physics union chemistry, किसी एक में भी पास हो जाए ना एटलीस्ट। देखो वो लोग ने बोला एटलीस्ट वन, मतलब यूनियन ही आपके दिमाग में आना चाहिए। सो दैट इज इक्वल टू 0.75। ओके सर, ओके, देन द 50% चांस ऑफ पासिंग इन एटलीस्ट 2। नाउ एटलीस्ट 2 में पास हो जाए, 2 से ज्यादा में हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 2 से कम में नहीं होना चाहिए, 2 से कम में नहीं होना चाहिए। सो एटलीस्ट 2 में पास होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.5 एंड 40% चांस ऑफ पासिंग इन एग्जैक्टली 2 इवेंट्स, एग्जैक्टली 2 इवेंट्स following the relations are drawn in M, P and C. Following relations are drawn in M, P and C. Okay, आपको कुछ रिलेशन दिए M, P और C के टर्म्स में, which of the relations are true? Gate 2015. Now this type of question can be asked in MSQ also, guys, right? आपको ये ऐसा MSQ में भी पूछ सकते हैं। अब तो gate is having the option of MSQ, multi-select questions. Which of the following statements are true? 1 is true, 2 is true, या both are true, right or not? So ऐसे सब करके आपका एक MSQ क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। सो अब हम इस चीज को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। नाउ आई वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी गुड एंड वेरी डीप पे, मतलब कॉन्सेप्ट को समझ के हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, सो हम लोग फर्स्ट, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था? What I have told you guys, what I have told you, just make the Venn diagram of this. Just make the Venn diagram, ठीक है। आप लोग जस्ट क्या करो, एक Venn diagram बना दो, and Venn diagram should be very neat and clean, guys.
वेन डायग्राम आपका बहुत ही नीट एंड क्लीन एक बनना चाहिए, ठीक है। सो आई एम टेकिंग द ब्लू कलर मार्कर फॉर सेट ऑफ मैथमेटिक्स, for set of mathematics. I am taking one green color marker, for set of physics, and I am taking one red color marker for set of chemistry, I am taking red color marker, right or not? Now I am defining the regions. So this is your region A, this is your region B, this is your region C. Then I am writing this region as D. I am writing over here the region as D over here. This is region E, this is region F, and this is I am writing as region G, right? So there are 7 regions. There are total 7 regions I have marked over here. Total 7 regions over there, right or not? Clear or not? ठीक है। Now अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा है वो चीज हम लोग लिख लेते हैं। the students passing in at least once मतलब वो either it can be maths or it can be physics or it can be, अगर किसी एक में भी पास हो गया ना, वो आप लोग का जो है उसका 75% चांस है। That means what? It is given that probability of maths, यूनियन फिजिक्स, यूनियन केमिस्ट्री, और अगर तुम रीजन को वो काउंट कर लो अपने डायग्राम से, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस डी, ये सारे रीजन काउंट हो जाएंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी ये लोग ने गिवन है, दैट इज 0.75। नाउ यू गॉट दिस क्लियर? फर्स्ट आपको ये क्लियर हुआ सब लोग को, राइट और नॉट? पहले बताइए एम यूनियन बी, एम यूनियन पी यूनियन सी, ये चीज आपको क्लियर हुआ कि नहीं? मैंने क्यों ऐसा लिखा? एटलीस्ट वन बोला है ना, एटलीस्ट वन बोला हुआ है, तो तीनों तीन का रीजन के सारे काउंटिंग करने। अब आपको रीजन देख के पता चलेगा, आपको इधर रीजन देख के पता चलेगा 50% चांस ऑफ पासिंग इन एटलीस्ट टू, 50% ऑफ चांस इन पासिंग एटलीस्ट टू। अब आप देखो ध्यान से, अगर आपके पास 50% चांस है फ्रॉम पासिंग फॉर एटलीस्ट टू, मतलब आपका कौन सा रीजन? तो एटलीस्ट टू मतलब जहां पे दोनों रीजन कंबाइन हो रहे हैं ना, वो सारे में कनेक्ट करूंगा, वो सारे रीजन में लिखूंगा। सो दो रीजन जहां पे कंबाइन हो रहे हैं, तो आप बोल सकते हो ये एक बी वाला रीजन जो है जिसमें दोनों रीजन कंबाइन हुए, फिर आपका एक ई रीजन है, एफ रीजन है, वो उसमें दोनों रीजन आपके कंपाउंड हुए, पर साथ में जी, क्योंकि उसमें तीनों रीजन है, तो हमको एटलीस्ट टू बोला है, टू से ज्यादा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी is equal to they have given, that is equal to your 50% chance। ये आप लोग का हो गया 0.5, that is your 50% chance। very good, b plus e plus f plus g, and now they have given me exactly 2। what is the chance of passing? exactly 2 means it is either b or e or f, that is you can write over here b plus e plus f, b plus e f plus, ये रीजन ऐसा है जिसमें दो ही सब्जेक्ट में वो पास हुआ होगा, so that is equal to, it is given that it is 0.4, it is given that it is what? 0.4, right or not? So now you are having the three equations from here, 1 2 and 3, you are having three equations। so if you subtract right guys, अगर आप लोग इसमें से b plus, okay, if you subtract 2 minus 3 अगर आप subtract कर लो, 2 minus 3 अगर आप subtract कर लोगे तो ये सारी चीज कैंसिल हो जाएगी। देखो ये कैंसिल, सबट्रैक्शन कर रहे हो ना आप लोग, तो ये सबट्रैक्शन करोगे तो कैंसिल, सिर्फ बचेगा आपके पास g, 0.5 minus 0.4, आप लोग को मिल जाएगा g का वैल्यू 0.1। नाउ g का वैल्यू 0.1 को समझना है, what is the value of g is 0.1, that means g is the probability of m intersection p physics intersection chemistry, right? That is the value, that is 0.1। so you can write this thing as what? so this is your, by the intersection theorem or by the इंटरसेक्शन थ्योरम जो है वो आगे मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा एक चीज, बट ये वही इंटरसेक्शन थ्योरम से प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी को हम लिख सकते हैं एम इंटू पी इंटू सी। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम भी इसको हम बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में आगे आपको समझाऊंगा, राइट और नॉट? सो जस्ट इधर आप लोग इसको लिख दीजिए कि जब इंटरसेक्शन की बात आती है यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी। जब इंटरसेक्शन की बात आएगी ना, आप लोग याद रख लीजिए, अभी के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं बाद में दिखते हैं, एम इन एम प्रोबेबिलिटी ऑफ एम एंड पी एंड सी, जब एंड बोलते हैं ना तब मल्टीप्लाई करते हैं। So m into p into c is 0.1। so first statement I am getting, this first relation I am getting, and can I see that relation in the diagram also? okay, I can see this relation number 3 is true, I can see this relation number 3 is true guys, relation number 3 is true, right or not? clear, ये clear हो रहा है? तो पहला तो थर्ड रिलेशन मेरा सही है, थर्ड रिलेशन जो है ना वो मेरा सही है, ठीक है। नाउ अगेन
अगर आप लोग देखोगे मुझे पी एम और सी के बीच में अगर रिलेशन चाहिए, सो अगर मैं सिर्फ मैथमेटिक्स बोलूं तो मैथमेटिक्स के टोटल कितने रीजन आ गए? अब बताइए मुझे मैथमेटिक्स के कितने टोटल रीजन आ गए, राइट और नॉट? नाउ आई वांट, ओके सी ओवर हियर, नाउ आई एम जस्ट टेकिंग द ऑप्शंस। ऑप्शन में मुझे p प्लस m प्लस c निकालना है, ठीक है? हम लोग वो लिखेंगे p प्लस m प्लस c। ऑप्शन में मुझे p प्लस m प्लस c निकालना है, ठीक है? चलिए अब देखो ध्यान से, सॉरी, p प्लस m प्लस c अगर मुझे निकालना है, अब तुम देखो डायग्राम के अंदर p रीजन मतलब फिजिक्स वाला रीजन कितना है, तो आप बोलोगे b प्लस c प्लस g प्लस f। ओके, फिजिक्स वाले रीजन में हम लिखेंगे b प्लस c प्लस g प्लस f प्लस मैथ्स वाला रीजन आप देखो, मैथ्स वाला रीजन a प्लस बी प्लस जी प्लस ई, ए प्लस बी प्लस जी प्लस ई। ओके, मैथ्स वाले रीजन में a प्लस बी प्लस जी प्लस ई, राइट? एंड केमिस्ट्री वाला रीजन अगर आप देखो तो e प्लस जी प्लस एफ प्लस डी। ओके, ई प्लस जी प्लस एफ प्लस डी, राइट? तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसको मैं लिख दूंगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। इसको एक बार मैंने लिख दिया क्योंकि आई एम हैविंग द वैल्यू ऑफ दिस ऑल थिंग, आई एम हैविंग द वैल्यू ऑफ सम ऑफ ऑल दिस थिंग्स, तो मैंने उसको एक बार लिख दिया, ठीक है? अब कौन से एलिमेंट दो बार रिपीट हो रहे हैं उसको साइड पे हम लिख देते ना, जो भी एलिमेंट दो बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोग के पास बी जो एक बार इधर आ गया और बी इधर, तो बी इज रिपीटिंग टू टाइम्स, तो अगेन आई वांट टू टेक बी ओवर हियर। नाउ सी दो बार रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो ना इधर सी रिपीट आपका दो बार नहीं हो रहा है। अगेन यू कैन टेक जी, ओके, जी आपका तीन बार रिपीट हो रहा है, राइट और नॉट? यू कैन सी ओवर हियर जी का रिपीटेशन आप लोग का तीन बार है, तो एक बार तो जी ऑलरेडी ले लिया, तो आप लोग इधर लिखोगे प्लस टू जी, प्लस टू जी आपका रहेगा। अगर आप एफ देखोगे तो एफ एक बार और दो बार रिपीट हो रहा है, तो एफ भी आप लोग एक बार लोगे, right? A is not repeating, B is also not repeating, E is also repeating two times, एक बार तो E आ गया, तो इधर मेरे पास लिखेंगे E की वैल्यू। So now I am having this value guys, now I am this value, ये मेरा वैल्यू था 0.5, और अगर तुम ये तीनों को कैलकुलेट करो, ये वैल्यू भी तुम्हारे पास था B प्लस E प्लस F, वो 0.4 के बराबर था, प्लस टू टाइम्स G के आपने वैल्यू ऑलरेडी निकाल दी, जो वो आ गई थी आप लोग की 0.1। clear? So now you can get the easily answer of this thing. So this is guys, this is your 0.75 plus this is 0.2, so आप लोग को ये मिल जाएगा 0.6 के बराबर, right? और 0.4 plus 0.2, so that is 0.6. So if you answer this thing 0.75 plus 6 कितना हो जाएगा, ये जरा बताइए? 0.75 plus 6, so it is 60 plus 75, 135. So this is 1.35. You will get as this answer as 1.35, ठीक है? एंड 1.35 आपके पास जब ऑप्शन में अगर आप चेक करोगे, सो 1.35 विल गिव मी द 27/20, 27/20 अगर आप करो 135, 1.35 मतलब 135/100, और अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो 27 5s are 135 and 20 5s are 100, 5 cancel, 27/20. So this first statement is also true. An obvious thing is that if first is true, second statement cannot be true. So that means relations 1 and 3 are true. Relation 1 and 3 are true. That is your GATE 2015 2-mark question. That is your GATE 2015 2-mark question guys, right? समझ में आया सब लोग को? बताइए मुझे, ये चीज समझ में आया आपको, राइट? इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन गेट 2015. you have the complete knowledge. Most of the students got stuck into this problem because they are very lack in knowledge, right? मतलब आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा है, क्या पूछा गया और क्या चीज को हम लोग को फाइंड करना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आई शुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द प्रॉब्लम। अगर मुझे लैंग्वेज समझ में आ गई क्या बोली गई है, तो मेरे को ये इजीली समझ में आ जाएगा। समझ आ रही है भाई गाइस? समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर हो रहा है? यस और नो बताइए मुझे, चलिए प्लीज फास्ट, यस और नो गाइस। ओके, राइट, आप लोग को समझ में आया सब लोग को? ठीक है, वेरी गुड टू से दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स, राइट? बहुत ही अच्छी बात है, आपको ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, करेक्ट। क्या रिपीट करूं सर? श्रुत क्या रिपीट करूं मैं? सिंपल चीज है ना, ये आप लोग का सिंपल चीज है, ये आपका आंसर जो है 1.3 आया, आप लोग का ये आंसर था। विदाउट वेन डायग्राम ये होता ही नहीं गाइस, विदाउट वेन डायग्राम इसका काम ही नहीं है होना, ठीक है? वेन डायग्राम से ही होना चाहिए, ठीक है? जी वाला रिपीट कीजिए। बड़े यार, जी वाला क्या किया मैंने?
इधर मेरे पास ये g की वैल्यू निकाल दी, मैंने क्या किया 2 - 3 कर दिया। 2 - 3 अगर मैं कर दूंगा तो b + e + f ऑलरेडी 0.4 है, तो g की वैल्यू मिल गई ना मुझे 0.5 - 0.4, 0.5 - 0.4। और मुझे p + m + c निकालना था, तो वहां से मैंने निकाल दिया, उसका आंसर मेरा 1.35 है। 1.35 को तुम लिख सकते हो 135 डिवाइड बाय 100 एंड दैट विल गिव मी द 27/20 आंसर। ये मेरे को मिल गया 27/20 आंसर। चलिए, समझ में आया? यस और नो? सर वही तो बता रहा हूं ना बे देवन, मैं वही तो बता रहा हूं कि जी वाला m इंटू पी इंटू सी कैसे आया। दैट इज द मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम। जब सॉरी मल्टीप्लीकेशन थियरम जब आगे आएगा वहां पे भी मैं बताऊंगा। whenever it is given the intersection thing, that means you have to multiply, that means you have to multiply m into p into c। इंटरसेक्शन बोला है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, ठीक है? वही तो मैं कब से बता जा रहा हूँ, ठीक है? वो चीज मैं आगे भी आपको बताऊंगा, ठीक है? यश श्रुत बताइए आपको क्या प्रॉब्लम था? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट गाइस, एनी डाउट? ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े। कोई डाउट है? ठीक है, चलिए। आई डोंट थिंक सो यू आर हैविंग सम डाउट। इट इज वेल, वेरी वेल अंडरस्टूड, क्लियर? ओके, किसका? मेरा नेट चला गया था गाइस? ओके, ठीक है। आई डोंट थिंक सो। ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए, बिकॉज आई डोंट थिंक सो मेरा नेट जाए ऐसा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी कैन गो विद द नेक्स्ट टाइप। सो सी ओवर हियर, दिस वाज द वन कॉन्सेप्ट अबाउट योर एडिशन थ्योरम एंड ऑल दैट थिंग, राइट? ये मेरा कॉन्सेप्ट हो गया। बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 1 होता है, राइट? एज अवर क्लास, मैं जनरली 1 आवर के क्लास लेता था पहले, तो उसमें फर्स्ट आवर में हम यही पढ़ाते थे। सो दिस वाज द बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 1। now again, now it is starting the basics of probability lecture number 2, right? बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी अब इधर से स्टार्ट हो रहा है, बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी लेक्चर 2, राइट और नॉट? सिंपल चीज था, एडिशन थियरम और वो सारे बेसिक्स मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बता दिए। अब मैं बताऊंगा बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी इन लेक्चर नंबर 2। क्या और चीजें हम लोग को जाननी चाहिए व्हेन वी आर स्टडीइंग प्रोबेबिलिटी, राइट और नॉट? सो आई एम ऑलवेज in probability, the best thing is to understand any concept. You just have to solve any one question of that. You can easily understand that concept, right? एक क्वेश्चन अगर हो जाता है उसके कॉन्सेप्ट का, तो आपको इजीली सब चीज समझ में आ जाएगी। अगर मैं सीधे सीधा कुछ बोल दूं आपको फॉर्मूला थियरम इन प्रोबेबिलिटी, दैट विल नेवर गेट क्लियर्ड, राइट? आपको कभी वो समझ में नहीं आएगा, राइट? वो कभी भी समझ में नहीं आता, ठीक है? चलिए, ओके, देन नेक्स्ट। सो क्वेश्चन इज, नाउ द क्वेश्चन इज, a bag contains 6 black balls and 4 blue balls. Okay, now 2 balls are drawn at random from this bag. Okay, I am taking out 2 balls from this bag. What is the probability that both balls will blue if the balls are drawn? Number 1, balls are drawn one by one with replacement, one by one with replacement, right or not? One by one with replacement guys, with replacement। with replacement मतलब आपने एक बॉल उठा लिया, फिर वो ही बॉल वापस अंदर रख दिया और फिर वापस आ रहा है। 2 balls are drawn at random from this bag. What is the probability of both the balls will blue if the balls are drawn one by one? Balls are drawn one by one with replacement. Balls are drawn one by one with replacement. Okay, चलिए, so suppose आप लोग पहले बॉल उठाया, so पहला बॉल आपका ब्लू आएगा, तो टोटल देयर आर 4 balls, right or not? टोटल देयर आर 4 blue balls, टोटल देयर आर 4 blue balls आउट ऑफ टोटल बॉल्स कितने हैं? चलिए, ओके, ब्लू बॉल्स कितने हैं पहले तो आप लोग इधर लिख सकते हो। ब्लू बॉल्स देयर आर 4 balls and what you can write over here, total balls, right? The total balls is equal to, over here is 6 plus 4 10, and okay, 6 plus 4 10। so पहला बॉल ब्लू आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/10। पहला बॉल ब्लू आ गया, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/10 एंड इट इज 1/1 with replacement। with replacement मतलब क्या? what is the meaning of with replacement? with replacement means what? समझ रहे हो तुम लोग क्या बता रही है? with replacement, 1/1 with replacement मतलब कि आप लोग वहीं पे एक बॉल उठाया और उसमें वापस डाल दिया आपने, वो बॉल आपने उठा के उसके अंदर वापस डाल दिया, ठीक है? वो बॉल उठा के आपने वापस डाल दिया। सो वापस आपके पास टोटल बॉल 10 ही बचे थे और उसमें अगेन आप लोग के पास ब्लू बॉल 4 होते, तो इसका आंसर आपका आ जाता 16
by 100, इसका आंसर आपका आ जाता है 16 by 100, that is 0.16. 16 by 100, that is 0.16. Or you can also write this is 4 by 25. You can also write this is as 4 by 25. 4 by 25. भव्य जैसा मैं बोल रहा हूं अभी ना, वही चीज आप सुनो. दैट इज नो नीड. अरे 4 ब्लू बॉल होंगे तो वो चारों 4 आइडेंटिकल बॉल होंगे ना, तो उसमें मैं क्यों सिलेक्ट करने जाऊंगा? व्हाई आई एम राइटिंग ओवर हियर 4C1? व्हाई आई विल राइट ओवर देयर 4C1? बोलो आप लोग. I am having the 4 blue balls and all balls are identical balls. Then why should I write 4C1? You don't make the things complicate over here, right? You don't make things complicate over here. I will tell you each and everything over here. See, आप लोग बोल रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं ना सर ये 4C1 by 10C1. अरे ये कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. 4 कलर के ब्लू बॉल है टोटल, उसमें से टोटल 10 बॉल में से 4 ब्लू बॉल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितनी हो गया आप बताइए मुझे. सिंपल सा हो गया ना, 4 by 10. Why are you writing there 4C1? Again your answer of 4C1 is 4 only. It is of no problem. But चारों 4 बॉल आइडेंटिकल है, तो why I have to select? Right? Why I have to select that thing? Right? I know that 4C1 is 4, right? Then why I have to select? Why are you making complicated? आप लोग ऐसा जरूरी बिठा देते हो अपने दिमाग के अंदर. I have always used to combination over here. जब कॉम्बिनेशन की बारी आएगी तभी यूज करो ना, जब जरूरत पड़ेगी तभी यूज करेंगे. बाकी हम लोग इसको नहीं करेंगे, बाकी हम लोग इसे नहीं करेंगे. So your answer is what? Your answer is what? 4 by 10 into 4 by 10. So with replacement, your answer will be 4 by 25. With replacement, your answer is 4 by 25. You got this thing clear, guys? You got this thing clear? Yes or no? बताइए मुझे. चलिए, ये चीज समझ में आई? Yes or no? Yes or no? Okay, guys. Okay, guys. Okay, guys. Now the second thing. Now the most important thing. That is second thing. Now the most important thing. Now 1 by 1 without replacement. 1 by 1 without replacement. So you have to do 2 independent processes. First you are drawing first ball. चलिए पहला बॉल अगर आप ड्रॉ करोगे, so in the bag if you can see, in the bag there will be total 10 balls. In the bag there will be total balls. Total balls आपको पहले कितने दिखेंगे? Total balls in the bag will be given by 10. Total there will be 10 balls in the bag right now, and in from that there are 4 blue balls. So the probability of drawing first ball as a blue ball, और पहला बॉल आपका ब्लू बॉल निकल जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 by 10. उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 4 by 10. फिर आप बोलोगे ओके पहला बॉल निकल गया. ओके फिर आपने बोल दिया, देखो ध्यान से, आप पूरा चीज एकदम ध्यान से सुने. अब प्लीज डोंट ट्राई, फर्स्ट लिसन वन क्वेश्चन, और फिर जब नेक्स्ट क्वेश्चन से आप ट्राई करो, बिकॉज मेनी आर गिविंग मी रॉन्ग आंसर्स ओवर हियर. ठीक है. सो अब जब मुझे पहला बॉल मेरा एक बार निकल गया, इफ आई एम गेटिंग द फर्स्ट बॉल, फिर आप क्या बोलते हो? ओके पहला बॉल निकल गया, फिर आप बोलते हो एंड अब मैं दूसरा बॉल निकालूंगा. अब मैं दूसरा बॉल निकालूंगा. जब भी एंड बोलते हैं ना, बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन आती है, याद रखना. जब भी आप, दिस इज अ प्योर लैंग्वेज, जब whenever you are saying the end thing, then you have to multiply. That is your multiplication theorem. जब एंड बोलते हो ना, तब आप मल्टीप्लिकेशन यूज करोगे, राइट और नॉट? सो जब आप एंड बोलोगे तो आप बोलोगे ओके एंड. नाउ फ्रॉम द बैक, नाउ इट इज गिवन विदाउट रिप्लेसमेंट. नाउ यू कैन नॉट प्लेस द बॉल विच यू हैव ऑलरेडी ड्रॉन. वो बॉल को तुमने साइड पे रख दिया या फेंक दिया, आप जो भी करो, बट अब बैग के अंदर टोटल बॉल्स आपके 9 रह जाएंगे. अब आपके बैग के अंदर जो है ना, वो टोटल बॉल्स विल बी 9 नाउ. टोटल बॉल्स विल बी 9, और उसमें आपने ऑलरेडी एक ब्लू कलर का बॉल उठा दिया था, तो अब ब्लू कलर के बॉल कितने उठ गए? दैट इज 3 by 9. सो योर आंसर विल बी हियर, इट विल बी योर, ओके चलो इसको ठीक से सॉल्व कर देते. तो आपका आंसर ये 3 और 3 कैंसिल कर देता, ठीक है, और ये आप लोगों का 4 जो है वो इधर कैंसिल करके इधर आप लोग 5 हो जाता. योर आंसर विल बी 2 by 15 ओवर हियर. सो 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट का आंसर 2 by 15 आया. अगर तुमने रिप्लेसमेंट नहीं किया था, उसका आंसर 4 by 25 आया. सी द डिफरेंस ऑफ द लैंग्वेज, राइट गाइस? आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? वेरी गुड, क्या बात है. चलिए, आपको लैंग्वेज का डिफरेंस समझ में आया. ओके सर, ओके सर, ओके. सी ओवर हियर, राइट? कौन सा बॉल ब्लैक हो सकता था? अरे मैं वही, हम लोग तो सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं श्रोत? वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट ब्लू बॉल, राइट? और सो 1 by 1 दोनों, पहला भी ब्लू निकले, तो दूसरे बैग में 9 बॉल रहते, उसमें भी वो ब्लू निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? दैट आई वांट टू थिंक, राइट और नॉट?
that I want to just calculate over here. वो दूसरा बॉल ब्लैक निकले तो वो उसकी तो जरूरत ही नहीं ना, हमें अगर ब्लैक बोला होता तो हम लोग ब्लैक निकाल देते ना. मुझे पहले दोनों बॉल I can get what is the probability of that, what is the probability that both the balls will blue, दोनों ब्लू बॉल हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी यू आर टेकिंग आउट, उसकी प्रोबेबिलिटी यू आर टेकिंग आउट. क्लियर और नॉट? राइट, समझ में आया ये चीज? समझ में आया? वी आर नॉट डूइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट कि अगर ब्लू बॉल आते तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती. ठीक है, राइट और नॉट? चलिए आगे. क्लियर? चांसेस क्या है उसके, मतलब अगर बैग के अंदर 10 बॉल है तो पहले में ब्लू बॉल आ जाए, उसका चांस क्या? तो तुम बोलोगे 4 अंदर थे, सो फेवरेबल आउटकम इज 4, और टोटल तो 10 है, तो 4/10, राइट और नॉट? ओके, राइट. एंड उसके बाद अब सुन लो कि पहले में आपका 4 आ गया, अब दूसरा बॉल उठाना है, वो दूसरा भी ब्लू आ जाए, तो अब मेरे पास व्हाट आर द फेवरेबल आउटकम्स? सो देयर आर ओनली 3 balls in the bag. There are only 3 balls in the bag out of the 9. There are only 3 blue balls in the bag now remaining out of all the 9 balls. तो सेकेंड टाइम भी ब्लू आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/9. सेकेंड टाइम ब्लू आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/9. करेक्ट और नॉट? 3/9 उसकी प्रोबेबिलिटी. क्लियर ये बात? क्लियर ये बात? यस और नो? चलो अब समझ में आ गया, राइट? ओके, अब आगे देखते हैं. आगे अब अगर तुम आगे इसको देखोगे, ओके, नाउ व्हाट आई कैन डू नाउ. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो बोलेंगे कि सर दोनों बॉल ब्लू आ जाए ना, दोनों बॉल ब्लू आ जाए, सो सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग one by one without replacement, one by one, probability of drawing ball one by one without replacement is always same as probability of drawing two balls at a time. Probability of drawing two balls at a time. Probability of drawing two balls at a time. मतलब इसके अंदर अगर तुमने एक वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट तुमने जो ब्लू बॉल निकाले, उस इट इज ऑलवेज द सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग. दिस इज व्हाट इट इज ऑलवेज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग टू ब्लू बॉल्स एट अ टाइम. टू ब्लू बॉल्स एट अ टाइम. तो दो ब्लू बॉल निकल जाए. सी ओवर हियर, व्हाट आर द फेवरेबल आउटकम्स नाउ? मेरे पास 4 ब्लू में से 2 बॉल निकल जाए, उसके कितने तरीके हो जाएंगे? 4C2. एंड नाउ व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम? 10 बॉल में से 2 बॉल सिलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने हैं? दैट इज 10C2. सो नाउ इफ यू राइट 4C2, इफ आई कैलकुलेट ओवर हियर, नाउ 4C2 विल बी 4 into 3 divided by 2, and 10C2 will be 10 into 9 divided by 2. So 2 and 2 will get cancelled. Again you are getting same expression that before you are getting the expression. Again if you cancel out this thing, here you will get again the answer as what? 2/15. मतलब 1 by 1 ball तुम उठा लो without replacement, it is always same taking a 2 balls at a time. It is always same, that probability will be always same taking 2 balls at a time. ठीक है, वही बता रहा हूं ना मैं. 1 by 1 यस, एक साथ दोनों बॉल निकाला ना, इसलिए 4C2 सिलेक्टिंग टू ब्लू बॉल्स आउट ऑफ 4 बॉल्स. और जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं आया वो मैंने आगे सिखाया ना, वैसा समझ लो, राइट और नॉट? वैसे समझ लो. द सिंपल थिंग इज व्हाट, आई एम टेकिंग 2 ब्लू बॉल्स आउट ऑफ 4 बॉल्स एट अ टाइम. में दोनों बॉल उठा रहा हूं. उसमें 1 by 1 बोला था ना, आप ऐसा मत करो. जब हमें 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट बोला होता है, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट बोला होता है, तो उसका मतलब आपको 2 बॉल एक साथ निकाल दो, वो दोनों की प्रोबेबिलिटी एक ही आती है. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 ब्लू बॉल्स एट अ टाइम? सो पहले तो आप लोग के पास व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो आपके 10 बॉल में से 2 बॉल उठाने के कितने तरीके हो सकते हैं? सो दैट इज योर 10C2. दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 balls out of 10 balls. Total number of ways. And from that, these are what is 4C2? It is the total number of ways of selecting 2 blue balls out of 4 blue balls. Total number of ways of selecting 2 blue balls out of 4. 2 blue balls out of 4.
right or not? So that will be 4c2 divided by 10c2. I will again get the answer 2 by 15, right? I will get the again I will get समय ओके। अरे ये दोनों चीज वही बता रहा हूं ना मैं, ध्यान से तुम सुन लो। ये प्रोबेबिलिटी का ये कॉन्सेप्ट है कि तुम अगर वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट अगर तुमको मैंने बोल दिया, और या तो मैं इन दोनों में से ड्रॉइंग 2 बॉल्स एट अ टाइम में बोल दूं, दोनों की प्रोबेबिलिटी 2 बाय 15 आई। देखो आपका आगे भी आंसर 2 बाय 15 आया था ना, वहां पे 1 बाय 1 का तुमने निकाला था, और इधर भी आंसर तुम्हारा 2 बाय 15 आया, इधर भी आंसर आपका 2 बाय, मतलब तुम दो बॉल एक साथ निकाल दो या 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट निकालो, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आती है। दैट्स इट, इतना आप समझ लो। समझ आया आप? क्लियर है ये बात? ठीक है, चलिए आगे। चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब क्लियर है ये। ड्राइंग 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू ड्राइंग 2 बॉल्स एट अ टाइम, इज ऑलवेज इक्वल टू ड्राइंग 2 बॉल्स एट अ टाइम। चलिए यार गाइस आगे नेक्स्ट। नाउ सी ओवर हियर 2 एट अ टाइम आ गया ना, थर्ड क्वेश्चन 2 एट अ टाइम। थर्ड ये पूछा, ये 2 एट अ टाइम, दोनों का आंसर सेम ही आया, हमने ऑलरेडी निकाल दिया। 2 एट अ टाइम हमने ऑलरेडी निकाल दिया। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब वापस नहीं रखना है अंदर, करेक्ट बात है। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब वापस आप नहीं रखोगे वो। सेकंड केस, सेकंड और थर्ड केस दोनों का आंसर सेम होता है हमेशा। सेकंड और थर्ड केस दोनों का आंसर सेम होता है। क्लियर ये बात? सेकंड और थर्ड केस का आंसर आपका सेम ही है इधर इस क्वेश्चन के अंदर हमेशा। सो ऑलवेज याद रखना 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट विल बी ऑलवेज इक्वल टू टेकिंग 2 एट अ टाइम, टेकिंग 2 एट अ टाइम। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन गाइस? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस और नो बताइए मुझे। चलिए चलिए गाइस ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, यस और नो बताइए मुझे। चलो, राइट और नॉट? ओके, यू गाइस गॉट क्लियर्ड अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है? ओके, डन डन। चलिए आगे आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गेट 2018, सी ओवर हियर, गेट 2018 वन मार्कर क्वेश्चन, वन मार्कर क्वेश्चन। देयर आर 4 रेड बॉल्स, 4 ग्रीन बॉल्स एंड 4 ब्लू बॉल्स आर पुट इन अ बॉक्स। ओके, तो टोटल बॉल्स आप पहले लिख दो, टोटल बॉल्स कितने हो गए? चलिए टोटल बॉल अच्छी तरीके से काउंटिंग, 4 + 4 8, 8 + 4 that is there are 12 box in the boxes. Now 3 balls are pulled out of the box at random, one after another without replacement. 3 balls are you have to pull together from the box one after another without replacement. The probability that all 3 balls are red, the probability that all 3 balls are red, okay, probability of one after another without replacement is same as selecting it, it is same as what? Selecting 3 red balls out of 4 red balls divided by how many ways of selecting 3 balls out of 12 balls? So that is 4c3 divided by 12c3, 4c3 divided by 12c3। 4c3 आपका 4c1 के बराबर होता है, करेक्ट और नॉट? 4c3 आपका 4c1 के बराबर, कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं ऐसा करता हूं, और 12c3 को मैंने 12c3 रखा। सो 4c1 मेरा हो जाता है सिर्फ 4, और 12c3 होता है 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल ऊपर 6 चला गया। अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे, सो मेरे पास इधर ये जो है वो 2 आ जाएगा, 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये भी कैंसिल होकर इधर 5 आ जाएगा। सो आई विल गेट द आंसर एज 1/55। आई विल गेट द आंसर एज व्हाट? 1/55। मेरा आंसर हो जाएगा 1/55। यू गॉट क्लियर, राइट गाइस? समझ में आया? 1/55 योर आंसर, राइट? 1/55 आप लोग का आंसर हो गया। चलिए आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोग को ये 3 बॉल, अगर सपोज ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, तो मैं ऐसे काम कर लेता हूं। अगर आपका पहला बॉल आपका अगर रेड बॉल आ जाए, फर्स्ट बॉल आपका रेड का ही पूछा ना, ऑल 3 बॉल्स है, तो पहला बॉल रेड आ जाए, तो रेड टोटल 4 बॉल है आउट ऑफ 12 बॉल्स, तो पहला बॉल रेड आ गया 4/12। एंड देन अब टोटल बॉल्स मेरे बचे 11, अब टोटल बॉल्स मेरे बचे 11, उसमें 3 रेड बचे, तो therefore the second ball to be red, the probability of that thing will be 3/11। and then अब मेरे पास टोटल बॉक्स के अंदर 10 बॉल बचे, और रेड टोटल अब 2 ही बचे, तो वो 2, अगर लास्ट ड्रॉ में भी मेरा रेड बॉल आ जाए तो that will be 2/10। so it is same as 4 into 6, 4 into 6 divided by 12 into 11 into 10, जो मैंने ये चीज इधर लिखी है, सेम आंसर आपका आता 1/55। you can again clear that concept, आपको इधर भी आंसर आ जाता 1/55। यस और नो बताइए आप, यस और नो? क्लियर हो रही है बात? चलिए बताइए मुझे गाइस,
Is this thing got clear in your mind? This is 1 marker question, very simple questions होते हैं, बहुत ही simple questions होते हैं. चलिए, okay guys, very good, very good. चलिए, आप लोग को ये चीज क्लियर हो गई. Next now again GATE 2019 recent question. Recent question now, GATE 2019 recent question. A ball has 8 red balls. A box has 8 red balls and 8 green balls, right? 2 balls are drawn randomly in succession from the box without replacement. See now, 2 balls are drawn randomly in succession means 1 by 1 from the box without replacement. The probability that the first ball drawn is red and the second ball drawn is green. The probability that the first ball drawn is red and the second ball drawn is green. Probability that first ball drawn is red and second ball drawn is green. See over here. सबसे पहले आप लोग के पास सिंपल सा केस है, ये सिंपल सा केस है कि पहला बॉल रेड आ जाए तो देयर आर टोटल 8 रेड बॉल्स एंड आउट ऑफ दैट 8 टोटल देयर आर 16 बॉल्स. सो फर्स्ट बॉल रेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 8/16 हो जाएगी. नाउ 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट. तो अब बॉक्स के अंदर टोटल मेरे पास 15 ही बॉल बचे होंगे ना. अब बॉक्स के अंदर मेरे पास अब 15 ही बॉल बचे होंगे. अब उसमें से दूसरा सेकंड बॉल माय ग्रीन आना चाहिए, तो ग्रीन भी मेरा क्या है 8, टोटल 8 ग्रीन बॉल होंगे ना उसके अंदर. रेड एक कम हुआ होगा ना, ग्रीन तो उतना ही रहा होगा ना. So this will be 8 into 8. So I can easily cancel out this thing over here. So this will give me 2 and this will give me 4. So this is your 4/15. This answer is your 4/15. Right? This answer is your 4/15. Now somebody is telling me 8/15. Now you can see over here, अगर किसी ने ऐसा किया, इसके अंदर सीक्वेंस इज गिवन गाइस. कौन से सीक्वेंस में आना चाहिए, राइट? आप लोग को इधर क्या दिया हुआ है, सीक्वेंस इज गिवन. सीक्वेंस इज गिवन मतलब पहला बॉल आपका रेड ही होना चाहिए और सेकंड बॉल आपका ग्रीन होना चाहिए. पहला बॉल, ये वापस वही बता रहा हूं ना मैं. पहला बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? टोटल 16 बॉल्स थे आउट ऑफ 8 रेड बॉल्स. So sorry, out of 16 there are 8 red balls. So what is the probability of red ball? 8/16. Then second ball आपका ग्रीन होना चाहिए. So अब एक बॉल तो चला गया, तो टोटल बॉल्स अब 15 रह गए. उसमें से टोटल अब ग्रीन बॉल्स कितने बचे? 8 ग्रीन बॉल्स बचे. So 8/15 वो हो गया. दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 4/15 आ गया. अब समझ में आया तुम लोग को? अब ये सीक्वेंस दिया है. अब मुझे ऐसा नहीं बोला है कि ओके नाउ माय क्वेश्चन इज इसी के अंदर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting one red and one green ball? What is the probability of getting one red and one green ball from this box? Same question, same cheese. What is the probability of getting one red and one green ball? What is the probability of getting one red and one green ball? वन रेड एंड वन ग्रीन बॉल, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, राइट? एक रेड तो आप बोल सकते हो. अब आप देखो, आपके पास दो चीजें हो गई इधर से. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन रेड एंड वन ग्रीन बॉल? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन रेड एंड वन ग्रीन बॉल? आप ध्यान से देखो कि आपके पास, आप बोल सकते हो कि मेरा एक केस तो ऐसा सकता है, पहला रेड आ जाए और फिर ग्रीन आ जाए, पहला रेड आ जाए और फिर ग्रीन आ जाए. और आप दूसरा केस ऐसा बोल सकते हैं, पहला ग्रीन आ जाए फिर रेड आ जाए. दोनों अलग अलग, मतलब आप लोग का एक रेड आ जाए, एक ग्रीन आ जाए और एक ग्रीन. ये दोनों केस आप लोग के पास हो सकते हैं. सो अगर पहला रेड आ गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मेरी 8/16, और फिर दूसरा ग्रीन आ जाए तो वो आप बोलोगे दिस विल बी सर 8/15. और बोला है, हमेशा याद रखना, प्रोबेबिलिटी के अंदर और लिखा होगा तब आप लोग प्लस लिखे. या तो आप बोल सकते हैं सर अगर मेरा पहला ग्रीन आ जाता तो उसकी प्रोबेबिलिटी 8/16 हो जाती, और दूसरा रेड आता तो उसकी प्रोबेबिलिटी मेरी 8/15 हो जाती. तो सर ये मेरे पास 2 times 8 into 16 मल्टीप्लाई बाय 8/15 हो जाता. सो अगर इसको तुम सॉल्व कर देते, ये 2 8s are 16 एक कैंसिल हो जाता. सो ये आपका आंसर हो जाता 8/15. सर आपका आंसर हो जाता 8/15. करेक्ट? देयर आर 2 केसेस, वन रेड एंड वन ग्रीन. सो पहला ड्रॉ रेड हो जाए, दूसरा ग्रीन हो जाए. या तो मेरा ऐसा भी तो हो सकता है, पहला ड्रॉ ग्रीन निकाल दिया और दूसरा रेड निकाल दिया आपने, ठीक है? और else what you can do, or else sir there are total
there are total 12 C2 ways of selecting 2 balls out of 12 balls. There are total 12 C2 ways of selecting 2 balls out of 12 balls. From that, out of 8 balls, I have to select 1 red, and and from 8 green balls, I have to select 1 green ball. So it is 8C1. That is 8C1 will give you 8, and 8C1 again will give you 8. Whole divided by 12C2 is 12 into 11. 12 into 11 divided by 2. So that 2 will come over here. Divided by 2, that 2 will come over here. And if you solve this thing now, if I am solving this thing, what I will get over here? Okay, sorry, this is not 12C2. There are total 16 balls, right or not? There are total 16 balls. Okay, I am again writing. There are total 16 balls. No, 8 plus 8, 16 C2 it will come. So 8 into 8, and here you will write 16 multiplied by 15 divided by 2 factorial. तो वो 2 factorial आपका ऊपर आ जाएगा. So if you write over here, this is 6. ये cancel हो जाएगा. आपका आंसर वापस से 8 by 15 आ गया. आपका आंसर वापस कितना आ गया? 8 by 15 आ गया. करेक्ट और नॉट? 8 by 15 आ गया. करेक्ट. सो हियर जस्ट मुझे ऐसा बोला गया था, एक रेड एंड एक ग्रीन, ऐसा बोला था. द सीक्वेंस इज नॉट मैटर ओवर हियर. सीक्वेंस नहीं दी थी, तब हम लोग ये दोनों मेथड यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज सिलेक्शन मेथड आल्सो, और यू कैन यूज दिस मेथड. बट व्हेनेवर द सीक्वेंस इज गिवन, यू कैन नॉट यूज द सिलेक्शन मेथड. आप वहां पे आप सिलेक्शन मेथड ये यूज कर ले, क्योंकि इन लोग ने बोल ही दिया है कि पहला बॉल मुझे रेड चाहिए एंड दूसरा बॉल मुझे ग्रीन चाहिए. वहां पे मैं सिलेक्शन वाली मेथड नहीं यूज कर सकता. ठीक है, वहां पे ये मैं सिलेक्शन वाली मेथड में नहीं यूज सकता. अरे तुम सिंपल समझ लो ना कि आपके पास एक रेड चाहिए, तो एक रेड बॉल सिलेक्ट करने में आप लोग के पास 8C1 टोटल. देयर आर वेज ऑफ सिलेक्टिंग 1 रेड बॉल आउट ऑफ 8 balls, and there are 8C1 ways of selecting 1 green ball out of 8 green balls, and there are total 16 C2 ways of selecting total 2 balls out of 16 balls. So these are total number of ways of selecting 2 balls. These are total ways. These are the number of ways of selecting red balls, and these are the number of ways of selecting green balls. Right or not? So ये जब ये हमारी कॉम्बिनेशन वाला जो ट्रिक आया ना, कॉम्बिनेशन, वो तभी यूज कर सकते हैं. सीक्वेंस डजंट मैटर. कॉम्बिनेशन का मतलब यही होता है ना. परम्यूटेशंस मतलब क्या होता है? द ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, and combination means the order is not important. Right? That is the meaning of combination only. ठीक है. सर कॉम्बिनेशन अलग से क्यों किया? वही तो किया था जो पहले 8 into 16 into 8 into 15 प्लस. हाँ, तो वही चीज मैं था. तो दोनों मेथड से तुम्हारा कॉम्बिनेशन से आंसर आ जाता है. दोनों मेथड से आंसर आ जाता है. ठीक है, राइट? ओके, ठीक है. चलिए, समझ में आ गया इतनी चीज. कोई सिंपल चीज है, ये सिंपल सी चीज है. राइट? ये मेरा क्वेश्चन है. 1 रेड, अरे यार तुम समझे नहीं जूही. 1 रेड और 1 ग्रीन बोला है ना, तो मैंने क्या किया? एक रेड लिया, एंड बीच में एंड ही होना. एक रेड एक ग्रीन, तो पहला रेड आ सकता है और ग्रीन, पहला रेड आ सकता है एंड फिर ग्रीन आ सकता है. या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, और आप क्या बोल सकते हो? पहला ग्रीन आ जाए एंड रेड आ जाए. तो मैंने क्वेश्चन में एंड दिया, बट देयर आर 2 केसेस और नॉट. राइट? तो ऐसा कंफ्यूज मत हो जाओ यार तुम लोग, इतने अंदर भी मत चले जाओ तुम लोग. समझ आ रही है बात? सो आप लोग थोड़ा सा समझो कि पहला रेड और ग्रीन रेड आ सकता है, या तो ग्रीन आ सकता है, और पहला ग्रीन आ सकता है एंड फिर रेड आ सकता है. सो मैंने एंड यूज किया, इसलिए तो इधर मल्टीप्लाई यूज किया ना. और देयर आर 2 केसेस फॉर दैट इज व्हाई आई एम एडिंग दिस थिंग. क्लियर? चलिए आगे आगे बढ़ते हैं. समझ आया गाइस? इतनी चीज समझ में आई? यस और नो? राइट नाउ आप लोग यार मेरा दम निकाल रहे हो इसमें. ये समझ में आ रही है ना बात है आप लोग को? ठीक है, कब कौन सी चीज यूज करनी है. दिस आर वेरी ट्रिकी थिंग्स. Right? So the thing is what, whenever the order is not important, you can directly use the combination technique, or you can use this method. Both the things you can use this method, both the things, your answer will be correct. But whenever it is the sequence, this sequence is important कि पहला ही रेड आना चाहिए और फिर आपका सेकंड बॉल ग्रीन आना चाहिए. वहां पे मुझे ये जरूरी है कि हम लोग को यही मेथड से आंसर निकालना पड़ेगा. 1 by 1 नहीं निकालना पड़ेगा. सो एट दैट केस 1 by 1 विल बी नॉट इक्वल टू टेकिंग 2 एट अ टाइम, बिकॉज हियर माय सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट. मेरा सीक्वेंस इधर इंपॉर्टेंट है. समझे कि नहीं? गेट 2019 में यही फर्क दिखाया था. और आप देख सकते हो 8 by 15 एक ऑप्शन भी वो लोग ने दिया हुआ है. मतलब जिसने अगर ये मेथड से कर लिया ना, एक रेड एंड एक ग्रीन वाला, तो उसका पक्के से वो 0.33 मार्क लेके चला जाता, वो नेगेटिव करके चला जाता. समझ में आ रही है बात आप लोग को? यस और नो बताइए मुझे. चलिए क्लियर हो रही है बात?
ये बात क्लियर हुई? यस और नो? आर यू गाइज गेटिंग दिस थिंग और नॉट? प्लीज टेल मी. ओके, you guys are getting this thing, right or not? Okay, chali, very good. So so this thing is clear. Now the next thing is there. Next time, this is the last question of today's session, right? आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, और फिर हम लोग कल मॉर्निंग में जो है वो दूसरे जो क्वेश्चन होंगे कल मॉर्निंग सेशन के अंदर हम लोग करेंगे. लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज. अ बैग कंटेन 5 व्हाइट बॉल्स एंड 9 रेड बॉल्स. सी ओवर हियर, टोटल बैग के अंदर 5 व्हाइट बॉल्स एंड 9 रेड बॉल्स है. 3 balls are drawn without replacement. See, 3 balls are drawn without replacement from bag. What is the probability that all 3 balls are white? Now guys, in the first case, is my sequence is important? No. आपके तीनों 3 बॉल व्हाइट होने चाहिए, तो 5 व्हाइट में से 3 व्हाइट बॉल सिलेक्ट करने के तरीके मेरे पास हो जाएंगे 5C3. ओके, और डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स कितने हैं? 14 है. टोटल बॉल 14 में से 3 सिलेक्ट करने के आपके पास 14C3. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. 5C3 डिवाइडेड बाय 14C3, राइट? 5C3 डिवाइडेड बाय 14C3. ओके, चलो फर्स्ट क्लियर हुआ सब लोग को? बताओ, सीक्वेंस इज नॉट देयर. सो फर्स्ट थिंग आप लोग का क्लियर हो गया. ये क्लियर है गाइस सब लोग को? चलो बताइए मुझे यस और नो. एकदम टोटल क्लियर हो जाए ना माइंड में तो ही बोला यस. ओके, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट exactly one ball is white? Now this is very good. Now exactly एक बॉल, आप लोग 3 बॉल उठा रहे हो ना, तो एग्जैक्टली एक बॉल आपका व्हाइट होना चाहिए. एग्जैक्टली एक बॉल. देखो ये शिवम बहुत सही पकड़ा इसने. शिवम ने बोला सर 3 केस आएंगे, एग्जैक्टली एक बॉल व्हाइट. तो आप ऐसा बोल सकते हो ना, चलो एग्जैक्टली एक बॉल व्हाइट मतलब पहला व्हाइट आ गया, फिर रेड आ गया और रेड आ गया. और तुम शिवम ऐसा बोल सकते हो पहले रेड आ गया, फिर व्हाइट आ गया और फिर रेड आ गया. और तुम ऐसा बोल सकते हो सर, और तुम ऐसा सकते हो पहले दोनों रेड आ गए, पहले दोनों रेड आ गए, पहले दोनों रेड आ गए और फिर व्हाइट आ गया. एग्जैक्टली वन व्हाइट. ये तीनों केसेस को तुम्हें ऐड करना पड़ेगा ना. फिर ये तीनों केसेस की अलग अलग प्रोबेबिलिटी करके ऐड करना पड़ता ना. ये प्रोसेस आपके लिए लेंथी हो जाती ना. हमको तो सिर्फ एक व्हाइट बॉल चाहिए. हमको सीक्वेंस इधर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इधर सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ एक व्हाइट बॉल चाहिए. तो व्हाट आई कैन डू ओवर हियर दैट, आप लोग के पास टोटल 5 व्हाइट बॉल्स है. 5 में से पहले एक व्हाइट बॉल में उठा लू. सो 5 में से एक व्हाइट बॉल उठाने के मेरे पास तरीके हो गए 5C1. एंड देन इसलिए मल्टीप्लाई लिखा. एंड देन आउट ऑफ 9 रेड बॉल्स, ऑब्वियस बात है मुझे 2 उठाने ही पड़ेंगे क्योंकि टोटल मेरे पास 3 बॉल उठाने के लिए दिए. सो 5 में से एक व्हाइट और 9 रेड में से 2 रेड, और टोटल तरीके मेरे पास हो जाएंगे इधर से. टोटल मेरे पास 14 बॉल्स है. 14 बॉल्स में से 3 बॉल निकालने के तरीके हो जाएंगे. सो दिस आर द टोटल वेज. These are favorable outcomes. These are your favorable outcomes. So favorable upon total, आप लोग का जो आंसर इधर से निकल जाएगा ना वो ज्यादा फास्ट निकलेगा. Instead of counting this all 3 cases, correct or not? समझ में आ गया? ठीक है. 5 में से एक, 5 रेड में से एक रेड निकाल, 5 में से एक व्हाइट निकालो. ऑब्वियसली बात, अदर 2 आपको रेड ही निकालने पड़ेंगे. अदर 2 विल बी रेड. ठीक है, राइट? सो यही हो गया ना. ओके, सो ये मेथड के अंदर तो क्या हो गया, ये व्हाइट बॉल रेड बॉल. ठीक है. और देखो यार दूसरे वाली मेथड जो है, तुम यार ठीक है चलो व्हाइट रेड और रेड प्लस मेरे पास हो जाता है रेड व्हाइट और रेड, और आप लोग के पास हो जाता है रेड एंड व्हाइट. ये तीनों केस हो गए. चलिए व्हाइट बॉल आपके पास 5 थे आउट ऑफ 14 और विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो अब बॉल्स हो जाएंगे 13. बट रेड बॉल्स मेरे पास 9 थे. अब रेड बॉल्स मेरे पास 9 थे एंड अब मेरे पास रेड बॉल्स 8 बच गए. अब मेरे पास ये हो जाएगा 12. सो एक तो ये हो गया फर्स्ट, ये केस हो गया. प्लस करके तुम इसके लिए ऐसा करते, टोटल तुम्हारे पास रेड बॉल्स कितने थे? 9 आउट ऑफ 14. फिर व्हाइट बॉल तुम्हारे पास 5 थे बट बॉल बच गए अब मेरे 13, राइट? और फिर आप लोग के पास थे टोटल 12 बॉल. वापस रेड आया तो रेड तो एक तो चला गया, तो 8/12, राइट? सिमिलरली इधर मेरे पास वापस 9/14 फिर 8/13 हो जाता, और 5 मेरे पास थे 5/12. अगर तुम ये तीनों के टर्म्स देखो ना, सारे टर्म्स सेम ही है. सो दिस इज 3 टाइम्स 5/14 into 9/13 into 8/12. इसका भी आंसर आपका सेम आता, इसका भी आंसर आपका सेम आता. बट दिस इज लेंथी प्रोसेस गाइस, दिस इज लेंथी प्रोसेस. तीनों बार सेम आएगा. ठीक है. सो दिस इज लेंथी प्रोसेस. So that is why why I can do here, combination technique will be useful for here. So it is not fixed that always this technique will give you fast answer. It depends on question. Here I can get the answer by using combination method very fast.
rather than using this technique, correct or not? So this is also clear. What is the probability of at least one ball is white? Okay, now the third case is what is the probability of at least one ball is white? Probability of at least मतलब एक व्हाइट बॉल आना चाहिए, राइट? सो आप लोग बोल सकते हैं वन व्हाइट, तो तुम बोल सकते हैं टू रेड, ओके, वन व्हाइट टू रेड, राइट और नॉट? राइट, वन व्हाइट टू रेड, या तो आप बोल सकते हैं ओके वन व्हाइट टू रेड, ये केस हो गया, एटलीस्ट वन व्हाइट, या तो आप बोल सकते हैं टू व्हाइट वन रेड, टू व्हाइट वन रेड, और आप लोग ऐसा बोल सकते हैं एटलीस्ट वन, तो तीनों तीन व्हाइट जीरो रेड, तीनों तीन व्हाइट जीरो रेड, एटलीस्ट वन व्हाइट बोला है ना, एटलीस्ट वन व्हाइट, राइट? सो वन व्हाइट टू रेड, टू व्हाइट वन रेड, और तीनों तीन व्हाइट, कोई भी रेड नहीं। और अब इसके अंदर भी तुम अगर देखने जाओगे तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे। कैसे? पहला व्हाइट आ गया, फिर रेड आ गया, फिर रेड आ गया, व्हाइट आ गया, रेड आ गया, या रेड रेड एंड व्हाइट, इसके तीन, फिर टू व्हाइट रेड, मतलब डब्ल्यू डब्ल्यू आर, डब्ल्यू डब्ल्यू आर भी हो सकता है, दो व्हाइट एक रेड, या डब्ल्यू आर डब्ल्यू, या आप लोग लिख सकते हो क्या, डब्ल्यू सॉरी आर डब्ल्यू डब्ल्यू, क्लियर? और इसका एक ही केस डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। अब गाइस ये सारे केसेस को तुम देखने जाओगे, दिस विल गिव यू अ वेरी लेंथी प्रोसेस, this will give you very lengthy process. Instead of what I have written that statement, at least one probability of at least one white, probability of at least one white, it is equal to 1 minus probability of no red, 1 minus probability of what, no red. Clear ये बात, right or not? Probability of at least one white, probability of at least one ball white, मतलब अगर आपका रेड बॉल कभी भी आएगा ही नहीं ना, तो ऑब्वियस बात है एक बार तो व्हाइट आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बॉल्स आर रेड, समझे कि नहीं? वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बॉल्स आर रेड, क्लियर और नॉट? ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू योर वन माइनस करे, अरे यार तुम सोचो एटलीस्ट वन व्हाइट, यार एटलीस्ट वन व्हाइट, एक व्हाइट आना चाहिए आपका, एक व्हाइट। तुम इधर भी केस देख लो, सारे में एक एक व्हाइट तो है, कौन सा केस इधर मैंने नहीं लिया? तीनों तीन रेड आ जाए वो केस मैंने नहीं लिया इधर, बाकी सारे केस मैंने इधर ले लिया कि नहीं ले लिए? तो तीनों तीन रेड आ जाए वो केस नहीं लेना, मतलब वन माइनस आई विल नॉट काउंट दैट केस इन विच ऑल द थ्री बॉल्स आर रेड। So all the three ball reds आने की probability, total 9 balls red है, out the number of ways of selecting 3 red balls is 9c3 divided by 14c3, so 1 minus 9c3 by 14c3 आपका ये आंसर मिल जाएगा, राइट? ये केसेस उतने हैं जिसमें तीनों तीन रेड होंगे, हमें वो केस काउंट नहीं करना है जिसमें तीनों तीन रेड हो, हमें वो केस काउंट ही नहीं करना जिसमें तीनों तीन रेड हो। और अगर तीनों तीन रेड नहीं हुए तो ऑब्वियस बात हो गया ना कि एक व्हाइट तो होगा वहां पे, ऑब्वियस बात होगा ना कि एक व्हाइट होगा, राइट और नॉट? राइट और नॉट? समझ आई बात? ओके ओके, ऑल रेड करेक्ट, नो रेड नहीं, सॉरी, मतलब इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे लोग, ठीक है, यस इट इज ऑल रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन माइनस ऑल रेड, राइट? प्रोबेबिलिटी ऑफ वन माइनस ऑल रेड, व्हाट आई हैव टू राइट? अगर मुझे नो लिखना होता ना इधर, अगर मुझे नो भी लिखना होता, आई शुड राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ नो व्हाइट, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो व्हाइट, नो व्हाइट मतलब ऑल रेड हो गया ना, अब ठीक है, अब ठीक है, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो व्हाइट, एटलीस्ट वन व्हाइट, एटलीस्ट वन थिंग इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, वो चीज मैं याद रखा था, इसलिए मैंने नो रेड नहीं नो व्हाइट लिखना था वहां पे, ठीक है? अब ठीक है, राइट? सो दैट इज वाई, करेक्ट करेक्ट, ओके, नो करेक्ट, नो व्हाइट नहीं, नो व्हाइट मतलब ऑल रेड, नो व्हाइट मतलब ऑल रेड, क्लियर है गाइस? अब ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को, राइट और नॉट? सो यू गाइस गॉट क्लियर दिस थिंग, ठीक है? ये आप लोगों को समझ में आ गया ना सबको? यस और नो बताइए मुझे, यस और नो, प्लीज टेल मी फास्ट गाइस। इट इज 12:53 PM, राइट? एंड आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, राइट गाइस? आप लोग को ये समझ में आया होगा सब लोग को, राइट और नॉट? जितना आज मैंने बताया आपको प्रोबेबिलिटी में, यू जस्ट हैव टू सॉल्व, तो वंस द टॉपिक गेट्स ओवर देन यू स्टार्ट सॉल्विंग ऑल दिस थिंग, राइट? क्या बता रहे हो? कल इवनिंग में क्लास क्या 9 PM को है? एक मिनट, 9 कल सर, कल इवनिंग सेशन 9 PM है क्या? बिकॉज हमें मैसेज आया कि डिजिटल लॉजिक की क्लास 8:30 to 10:30 है, तो टाइम क्लैश होगा ना, सो दैट यू कैन टॉक विद द मैनेजमेंट गाइस, राइट? दैट यू कैन टॉक विद द मैनेजमेंट, ठीक है? नन वाइट, नो वाइट, ठीक है?
एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, यू आर सॉल्विंग, यू आर टेलिंग मी, ओके चलो पहले ये चीज समझ में आया सबको। चलो वो जो क्लासेस वाला सेशन है ना, मेरा तो शेड्यूल फिक्स्ड है, राइट। अगर कोई और दूसरा शेड्यूल आता है तो वहां पे आप मैनेजमेंट से एक बार बात कर लीजिए, है ना। ये आप लोग का मैनेजमेंट से एक बार बात कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्या बोल रहे हैं, चलो क्या बोल रहे हो, एक मिनट, वन बाय वन। ओके, चैट तो इतनी फास्ट आ रही है तो मुझे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। सर कल क्लास कितने बजे है सर, हम वो कोई मैसेज नहीं आया। अरे यार, कल हमारा मैथ्स का क्लास मॉर्निंग को एक होता है 8:30 वाला क्लास, सॉरी 7:30 वाला क्लास, और इवनिंग 9 o'clock का क्लास है, ठीक है। हाँ मेरा क्लास है कल, मेरा क्लास है, फिक्स्ड है। कल सैटरडे हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा संडे तक का क्लास है, राइट। एंड इवन आई वांट टू टेक ऑन मंडे मॉर्निंग आल्सो, राइट। सो मेरा एक वो जो एक दिन छूट गया था, वो मेरा बीच में हो जाए, राइट। सर वो मुझे कुछ नहीं मालूम, 23 बैच एंड 22 दैट आई एम नॉट नोइंग। आई एम हैविंग द शेड्यूल that I am having the class on tomorrow, so I will take my class tomorrow, right? I will take my class tomorrow with full energy, right? एनर्जी पूरी रखनी है और आपको भी रखनी है, ठीक है गाइस। ओके ओके, राइट। सो ठीक है, चलो कल मॉर्निंग के अंदर हम मिलते हैं, और आप लोग जस्ट हम लोग इसकी इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी कल मॉर्निंग रेगुलर टाइम है गाइस। कल मॉर्निंग में सिर्फ मैं 1 ही घंटे का क्लास ले पाऊंगा, एज आई हैव सम अर्जेंट वर्क दैट आई हैव टू कंप्लीट, so I will take only 7:30 to 8:30, but whatever time which I am not taking tomorrow, I will cover that thing in the evening class, or I will cover on the Monday morning also, right? मतलब कभी कभी मैं एक आधा घंटा जो वो बचा हुआ ना, वो ज्यादा ले लूंगा कोई एक टाइम पे, ठीक है। मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन का सेकंड स्टेटमेंट समझ नहीं आया, प्लीज रिपीट कर दो ना। ओके चलिए, मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन, अच्छा अब मुझे याद है सर ये क्या बोल रहे हैं। मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन जो मैंने आगे करवाया था, उसका स्टेटमेंट एक बच्चे को समझ में नहीं आया। चलिए हम लोग ये पे आते हैं। ओके, सेकंड स्टेटमेंट तुम्हारा जो है यही बता रहे हो ना, किसका डाउट था, ये यही तुम बता रहे हो ना, जो डाउट था। आई थिंक जो डाउट जो था वो मेरे पास था, इधर किसका था, अभी किसने बताया ना, मोहित का डाउट है। मोहित अगर आप देखो कौन सा सेकंड स्टेटमेंट तुम्हारा, ये 1 2 3 लिखा है उसमें सेकंड स्टेटमेंट है, या इधर जो क्वेश्चन है उसमें सेकंड स्टेटमेंट, राइट। 1 2 3 में ऑब्वियस बात है, सेकंड स्टेटमेंट जो है P प्लस M प्लस C का आंसर मेरा ऑलरेडी 27/20 आ गया था ना, 50% वाला स्टेटमेंट। ओके करेक्ट। देखो मोहित उसके अंदर क्या बोला है, उसके अंदर बोला है 50% ऑफ चांस ऑफ पासिंग इन एटलीस्ट टू। एटलीस्ट टू मतलब क्या, ये वाला रीजन, फिर ये वाला रीजन 2 है, और ये वाला रीजन, और ये रीजन भी तो एटलीस्ट 2 वाला हुआ ना, जी वाला रीजन, क्यों, क्योंकि उसमें 3 है, तो 3 में एटलीस्ट 2 तो आएगी ना। सो B प्लस E प्लस G प्लस F, उसका वैल्यू 0.5 मैंने लिखा था, उसका वैल्यू मैंने 0.5, और फिर एग्जैक्टली 2 में G नहीं आएगा, एग्जैक्टली 2 में 3 वाला नहीं आएगा, इसलिए B प्लस E प्लस F 0.4 हो गया था। सबट्रैक्ट किया तो मुझे G की वैल्यू मिल गई 0.1। अब क्लियर है मोहित, अब क्लियर है, यस और नो, करेक्ट। ओके बोलिए देवेन। सर वो लास्ट सेकंड सम थे ना जो, तो उसके अंदर आपने वो बताया था ना, मतलब कि वो कैसे, मतलब कि ये जो सीक्वेंस मैटर करता है, वो एक बार रिपीट कर दीजिए ना। ओके देखो इधर, इधर तुम्हारे पास जब ये क्वेश्चन था ना देवेन, तो इसके अंदर लिखा हुआ है ना कि पहला बॉल रेड, फर्स्ट बॉल, वो लोग ने बोला हुआ है सीक्वेंस कि पहला बॉल ही रेड आना चाहिए, सेकंड बॉल ग्रीन आना चाहिए। सो दैट इज व्हाई सीक्वेंस मैटर, एंड दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग कि पहला रेड, तो टोटल 16 बॉल में से 8 बॉल रेड थे, तो पहला बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी 16 में से 8 हो गई। क्लियर। ओके नाउ अब आपके पास बॉल बच गए 15, और एंड एंड बोला है, देखो एंड द सेकंड बॉल, एंड मतलब मल्टीप्लाई, एंड द सेकंड बॉल इज ग्रीन, तो सेकंड बॉल ग्रीन आ रहे, तो ग्रीन भी तो मेरे पास 8 ही है ना। सो 8/15, तो ये आंसर तुम्हारा देवेन हो जाता 4/15। समझे, अगर सिर्फ ऐसा लिखा होता ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड एंड 1 ग्रीन, 1 रेड 1 ग्रीन सीक्वेंस बोला है, नहीं बोला है ना, तो कोई भी रेड हो सकता है, कोई भी ग्रीन हो सकता है, तो इसके लिए वो चीज मैंने इधर लिखा, देखो 1 रेड 1 ग्रीन, so either it can be RG or it can be GR, so you can solve by this method also, or else you use your combination trick, because in combination sequence is not matter, right? sequence नहीं मैटर करता उसमें, ठीक है। क्लियर, ओके गाइस, वेरी गुड। चलिए एंड सर आप ये जो बुक को कौन सी यूज करते हो, जो आप प्रीवियस ईयर के लिए? प्रीवियस ईयर के लिए मेरे पास तो बहुत सारी बुक्स है, मतलब आई एम यूजिंग दी IAS मास्टर, आई एम हैविंग गेट एकेडमी बुक, बहुत सारी बुक्स है मेरे पास प्रीवियस ईयर की, राइट और नॉट। सो उसके अंदर तो मुझे, मतलब ये तो बहुत पुराना है मेरा, 7 7 साल के पहले से मेरे पास ये सारा तो बना हुआ है, ठीक है। तो
ये प्रीवियस ईयर में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, आप लोग इजीली देख सकते हो, राइट? जो भी आप लोग को अच्छी लगे प्रीवियस ईयर में। और सर हमारी जहाँ पे लिंक आती है ना, वहाँ पे वो लिंक अवेलेबल नहीं है, कल शायद लेक्चर नहीं है आई थिंक। एक बार आप मैनेजमेंट से बात करना, कल तो मेरा पक्का लेक्चर है, बिकॉज मेरे शेड्यूल में दिया हुआ है, राइट? इन माय शेड्यूल इट इज गिवन। सो ओके, मैं एक और बार मैं भी चेक करूंगा, और फिर जो भी होगा मैं आपको मैनेजमेंट से आप लोग को पता करवा दूंगा, या आपको मैं टेलीग्राम वाले में मैसेज कर दूंगा, जो भी हो। एक बार मैं भी पता कर लेता, बिकॉज मैंने देखा नहीं है, बट मेरा लेक्चर रेडी है, पीपीटी मेरा रेडी है। सो ठीक है, देख लेते हैं, राइट और नॉट फिर। हाँ, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में और मेल भी नहीं है, और एप्लीकेशन में भी नहीं वहाँ पे डिस्प्ले है जो लेक्चर शेड्यूल होता है ना उसमें। ओके चलो, मैं चेक कर लूंगा एक बार, ठीक है? ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे शेड्यूल में तो ये पूरा वीक था, ये पूरा वीक था, संडे भी था मेरा एक्चुअली, राइट? नॉट मेरे कल शेड्यूल रात में। को भी एक दूसरे लेक्चर शेड्यूल है, इसीलिए फ्लूइड मैकेनिक्स शेड्यूल है। एंड यू आर फ्रॉम बीच ब्रांच? ओके, यू आर फ्रॉम मैकेनिकल, मैकेनिकल और सिविल, नो मैकेनिकल। एंड यू आर गिविंग गेट 22 और 23? No sir, 23. That means I am giving 22 also. Okay, Right so now in you are 20. third year student, so you are trying for 22, you are just giving first try 22, and you will give your last try 23, मतलब मेन ट्राई तुम्हारा 23 रहेगा, राइट हो ना? Yes sir. ओके ठीक है फिर। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का शेड्यूल है, तो मैथ्स तुम्हारा हुआ नहीं है पूरा अभी तक देवेन क्या? नहीं सर, ये रिवीजन है मेरा, एक बार हो गया। हाँ अच्छा, एक बार हो गया ना, तो दैट इज व्हाई दे हैव पुट इन द फ्लूइड मैकेनिक्स क्लास, राइट और नॉट? सो ये रिवीजन, फिर वहां पे तुम्हें वही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा ना फिर तो। ओके, एक बार हाँ हो अब समझ, हाँ हाँ अब समझ में आ गया। हाँ, करेक्ट ये और सिर्फ 2022 बैच के लिए है। या दिस इज फॉर 2022 बैच, राइट? सो आपने एक बार मैथ्स कर दिया, तो फिर दूसरी बार इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बट प्रोवाइडेड दैट यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दैट फैकल्टी वेरी वेल, राइट? मतलब आपको अगर किस में समझ में आ रहा है तो वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है फिर, ठीक है ना? हाँ सर, 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ, मतलब जितनी बार हो रहा है ना उतनी बार रिपीट कर रहा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। आप हूँ। ओके सर। ओके, थैंक यू गाइस, देन थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, राइट? ओके चलिए, सर हाँ बोलिए। सर एक वो मैथ्स फिजिक्स वाला क्वेश्चन वापस निकालिए। मैथ्स फिजिक्स वाला क्वेश्चन, ओके केमिस्ट्री। करेक्ट करेक्ट, एक मिनट रुक जाओ। मैथ्स, ओके बोलिए। सर इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है P प्लस M प्लस C हाँ 27/20, ये जो 27/20 है ये क्या है? ये प्रोबेबिलिटी है? हाँ, तो प्रोबेबिलिटी है ना ये P प्लस M प्लस C तो की। सर प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 हो सकती है? अब तुम ये सोचो कि ये यूनियन की प्रोबेबिलिटी है, अब तुम ये समझे नहीं ना कि तीनों तीन में से, तीनों तीन के अंदर P प्लस A यूनियन B यूनियन C, ऐसा हो गया ना ये प्रोबेबिलिटी, तो हाँ। राइट नॉट? नाउ दिस इज, नाउ यू कैन सी ओवर हियर, ये तुम समझे नहीं। एक मिनट रुक जाओ, ये मेरा जो आंसर आ रहा है, ये मेरा जो आंसर आ रहा है, जो आपका P प्लस M प्लस C का आया, तुम सोचो कि ये जो आंसर है ना, ये मेरे पास ऐसे भी हो जाएंगे जो वापस रिपीट हो रहे हैं। देखो आप विश्वराज, तुम इधर देखो हाँ कि हाँ B प्लस F और एक बार ऐड हो रही है, और 2G और एक बार ऐड हो रहा है, इसलिए मेरा आंसर ये गया ना। बाकी इसका आंसर तो 0.75 था ना, एक एक बार सारे ऐड कर दो, वो तो आंसर मेरा 0.75 था ना। बट इसके अंदर वो भी रीजन आ गए जो दो दो बार रिपीट हो रहे हैं, और जी रीजन तो 3 बार हो जाएगा, ऐसा हो गया ना, इसलिए मेरा ये आंसर 1 से ज्यादा बन गया। समझे कि नहीं? हाँ। अगर यहाँ Clear? पे फिजिक्स की प्रोबेबिलिटी 1 होती, मैथ्स की भी 1 होती और केमिस्ट्री की भी 1 होती, तो टोटल आंसर 3 आता या 1 आता? फिजिक्स तो 1 तो ऐसा तो फिर बनता ही नहीं ना। अगर फिजिक्स की भी 1 है, मैथ्स की भी 1 होती है, और केमिस्ट्री की भी 1 होती है, उसका मतलब 100% रिजल्ट आ रहा है, तो फिर कोई एग्जैक्टली 2 क्या सबके सभी पास हो गए ना तीनों तीन के अंदर, हाँ, तो आंसर क्या आता है? 3 आता या 1 आता? तो आपका आंसर सबके सब तो 1 ही रहता ना फिर तो। सारे के सारे लोग 100 स्टूडेंट्स से 100 स्टूडेंट्स आर गेटिंग पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, सो 100 आउट ऑफ 100 दैट इज 1, करेक्ट कि नहीं? ठीक है सर। समझे? थैंक यू सर। ओके ओके ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस, आई एम लीविंग नाउ, राइट? ओके गाइस।